start. So good evening, everyone. And Navratri is good, time, good Murat to start with your actual official course. So last 1 or 2 weeks we have spent onto the basics, probably gain a little confidence how we can develop the software, and also understood that to develop a software, that how much really logic you need, how much efforts that you need. And I'm very sure we also spend a little time understanding how to deal with the git, how to give the proctored exams, and etc etc. I'm very sure whatever time that we have invested in last 1 or 2 weeks, that will really help you to absorb these new technologies in bit easier way. And now you should be really set where we can start discussing the things technically. Before I just start with the module, let me make it very clear. Last 1 or 2 weeks you must have seen me, and you must have seen that okay, if we are going a bit faster somewhere, I'm just quickly developing a code and then jumping onto the like next and all that. The purpose was a bit different, because as I said that you people were knowing already C programming, at least I need to assume that. And then it was like focus was like what we are supposed to develop. So it's like a developing a mini project, that was a focus, not really learning the things. Now the things are a bit different. Now we are not starting with that. We are starting right from scratch. We are started talking about like what is database, and from there we will discuss each and everything, probably into the enough depth. Not everything on one day. We will keep learning it gradually. We'll keep learning it step by step, so that as we can start with a very basic level question, what is database today, probably by the end you are in a position to manage the database level users. You should be able to handle the security of the database. You should be able to write some really cool queries onto the database. Apart from that, you are able to write the MySQL programming, something we call as stored procedure, or like what is that, triggers or something like that. Yes, we will go even up to that particular level. But as I said that, not in one day. We are planning nearby 2 to 3 weeks will be spending onto this module, where you will become comfortable. You are expected to become comfortable with the databases. With the databases. So what all things that we are trying to learn in this particular module? Yes, let me just go ahead and let us begin from there. What all we are trying to learn in this particular module? What whole our syllabus is, then how this module evaluations will be done, what other things that we'll be conducting along with the modules. करेक्ट. सो पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग मॉड्यूल कैसे हमारा प्रोग्रेस होने वाला है, हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, कैसे कैसे देखने वाले हैं, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस. यस, सो वी विल टॉक अबाउट दैट. So this is definitely not really the agenda. I cannot say that agenda. This is a syllabus. This is syllabus for the whole module. Correct. What all we are going to learn. Obviously abhi maine yahan par, if you go into more detail, you will understand that as far as this module contents are concerned, this module syllabus is concerned, it is having two main parts. One part is you call it the RDBMS. To be frank, 99.99% the module is actually driven by the RDBMS part only, as per the as per CDAC guidelines. Yes, it is focused on RDBMS, and out of that RDBMS, we will talk today what is RDBMS, what are different types of RDBMS today. Yes, we have got RDBMS like MySQL that we'll be using. However, we will at the end, last one session, we will reserve to get the introduction of NoSQL, and if time permits, how we can write a kind of a hello world kind of stuff with the MongoDB databases. Correct? Hardly one lecture, not more than that. But as I said that the majority of syllabus is focused on the RDBMS, so we will learn that as far as the syllabus is concerned. यहाँ पर जो मैंने आपको syllabus दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा RDBMS MySQL का syllabus है. So हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे in this whole module? Yes, we will start today in understanding what is DBMS, what is RDBMS, what is the difference between them, what are the highlights, and etc etc. We will go ahead, we will talk about what is MySQL database, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग देख लेंगे.
Installation, I'm not really going to talk about today because we already had a session onto this, and I'm very sure you people have already installed MySQL database. I'm hoping it correctly. So आप सबके मशीन के ऊपर MySQL अभी के लिए इंस्टॉल्ड है, ये मेरा एजम्पशन है, करेक्ट? और आज हम लोग उसको यूज करने वाले हैं, हम लोग उसके अंदर एक्चुअल क्वेरीज लिखने वाले हैं, नॉट मच टुडे, जस्ट टू गेट स्टार्टेड। आई एम सेइंग दैट जस्ट टू गेट स्टार्टेड उतनी ही क्वेरीज हम लोग लिखने वाले हैं, बट डेफिनेटली टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग दैट from next session, means from tomorrow, you can expect that things we will start using it more of practically. आज का लेक्चर ज्यादा से ज्यादा टाइम शायद हमारा थियरी में जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आई एम गोइंग अहेड। तो दिन MySQL, the whole programming is like a structured query language. The whole programming is like a structured query language. तो इस सिलेबस में हम लोग जो पढ़ेंगे, we will learn right from how to create a table, what are different data types. प्लीज नोट, जब हम लोग ने आपको सी प्रोग्रामिंग या जब हम लोग केस स्टडी पढ़ रहे थे, हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे थे कि डेटा टाइप कौन कौन से है, रादर मैं तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर लिखना चालू कर दिया था। मैंने कहा ना कि एट दैट टाइम पर्पस वाज वेरी सिंपल कि हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। लेकिन अभी हमारा गोल कुछ अलग है। हमारा गोल ये है कि हमें हमें MySQL फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना है। तो फ्रॉम स्क्रैच मींस लिटरली व्हाट इज SQL, उसका फुल फॉर्म क्या है, वहां से लेके MySQL के अंदर डेटा टाइप कौन से होते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग obviously from scratch, and yes, it is far different from C programming. Only thing that remains common is like a logic building. Logic building is something common, ये आपको लगने वाला है। Syntactically this is altogether different stuff. Going ahead, we talk about like select query. So we will talk about select query, we'll talk about there are multiple different things that we will be doing, grouping, ordering, and etc etc. We will talk about it, how do we retrieve the data, how we can insert the data into the tables, how we can modify the data into the table, how we can delete the data from the tables. Yes, we will talk about it. We will also talk about the advanced features like how we can join two tables or how we can run a subqueries. We will also discuss something called a transaction, and then how optimistic locking or how pessimistic locking and these kind of concepts are also working behind the scene. हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं. We will also talk about the security, how you can grant the permissions, how we can revoke the permission. So database administration किस लेवल पे काम करते हैं, नॉट पूरा बट एटलीस्ट उसका एक ट्रेलर हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे एज फार एज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज कंसर्न। मैं आज के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और ये सब कुछ पढ़ने के लिए 2-3 वीक लगने वाले हैं। So sit with that. Let us go step by step. Let us not try to learn everything onto the day one. Please have patience. और ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, let me make it very clear, हम लोग हर एक चीज प्रैक्टिकली पढ़ने वाले, नॉट थियोरेटिकली। तो इसमें से हर एक चीज, लेट इट बी ट्रांजैक्शन, लेट इट बी लॉकिंग, लेट इट बी ग्रांट रिवोक, हम लोग हर एक चीज का क्वेरी लिखने वाले, क्वेरी मैं भी लिखने वाला और आप लोग भी लिखने वाले। एंड द रिजल्ट्स आर समथिंग एक्सपेक्टेड दैट कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो रिजल्ट मेरे मशीन पे आते हैं, आइडियली ऑब्वियसली सेम रिजल्ट्स आपके मशीन के ऊपर भी आने वाले। टेक केयर। तो हम लोग सिर्फ छोटे छोटे क्वेरीज लिखेंगे क्या? नॉट एट ऑल, हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी लिखेंगे, नॉट टू बिग obviously, not as big as your C programs. MySQL programs are always smaller ones as compared to your C programming skills. So there is something called as stored procedures, there is something called as the cursors, there is something called functions, there is something called triggers. हम लोग इस सब का हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। बहुत बार बाहर की दुनिया में लोग इसको जानते हैं बाय द नेम PL/SQL, बट PL/SQL ये थोड़ा सा ओरेकल का वर्ड है। हम लोग टेक्निकली जो MySQL का वर्ड है PSM, persistent storage module. So हम लोग persistent stored module हम लोग ये पढ़ने वाले। So this is something we are planning to learn in this entire module. And obviously, as I said that one lecture we will try to dedicate to discuss what is NoSQL, what is MongoDB, at least a kind of overview. Yes, we will talk about that. Now, once you are okay with this, you understood, okay, ऐसा कुछ कुछ होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, तो सर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ेंगे तो इतना ही, but the module is not limited to the syllabus coverage. There is something more, and something of ingenious interest is that how this module will be evaluated. So मैंने सुना है कि इंजीनियर्स को आप लोग पहले ये बता दो एग्जाम के पेपर में क्या आने वाला है, पेपर कौन सा टाइप का आने वाला है. सो इंजीनियर्स डू रियली गुड. सो आई थॉट दैट कि बिफोर आई स्टार्ट विद द मॉड्यूल आई शुड टेल यू, बिकॉज सीडैक में इंजीनियरिंग जैसा बहुत कुछ चलता है बट नॉट एवरीथिंग. स्पेशली
वो जो एक इंजीनियरिंग में एक ये होता है प्रिपरेटरी लीव, पीएल. So that kind of PL kind of concept is unfortunately not applicable for CDAC. So neither सर हमारा कैंपस चालू होगा तो उसके पहले हमको पीएल मिलेगा क्या? Likely chances is no. सर हमारा जो CDAC का कोर्स एंड एग्जाम होगा हमें पीएल मिलेगा क्या? To be frank, no. हमारा जब लैब एग्जाम होगा तो सर उसके पहले आप 2 दिन छुट्टी दोगे क्या? No. There is no separate preparatory leave because it is expected that the CDAC course you are expected to prepare every day. You are expected to learn every day. And that is the reason I should not tell you, after 10 days कि हमारा एग्जाम इस टाइप का होगा. I thought that ये सबसे पहले दिन से हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे. So don't worry about it. Correct? Then just to go ahead, the evaluation. तो evaluation methodology में क्या क्या होगा? So you find that every module is evaluated for 100 marks. And then you start with the theory of 100 marks. You got lab of 100 marks and even internals of 100 marks. Correct? So theory of 100 marks. Yes. So no, theory is of 40 marks. Lab is of 40 marks and internals is again of 40 marks. See, जो theory exam होगा ये कब होगा? This theory exam is something we call it as CCEE, CDAC course end exam. So this is usually conducted at the end of the course. This is conducted at the end of the course, and this is entirely like your MCQ based kind of exam. This is like entirely your MCQ based kind of exam. Multiple choice questions we will be learning. Then coming back to the lab. What about lab? How the lab, 40 marks of lab is evaluated. This is probably divided into two different components. One component is a proctored lab exam. अब ये proctored lab exam क्या है? ये आपको समझाने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम लिया था सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. लेकिन अगेन उस एग्जाम का पर्पस आपको मार्क्स देना था भी नहीं. उस एग्जाम का जो प्राइमरी पर्पस था वो ये था कि आपको एनवायरमेंट समझाया जाए कि प्रॉक्टर्ड एग्जाम कैसे होता है, प्रॉक्टर्ड प्लेटफॉर्म कैसे होता है. आई एम वेरी श्योर आपको वो समझ में आ चुका होगा. सो देयर विल बी एग्जाम ऑन अ प्रॉक्टर्ड प्लेटफॉर्म, द प्रॉक्टर्ड लैब एग्जाम. दैट इज सेकंड. Once you have a proctored lab exam that is nearby 25-30 marks, and along with that your lab assignments will be evaluated. लैब असाइनमेंट का इवैल्यूएशन हम लोग बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में करते रहते हैं. सो एज योर मस्ट दिग्विजय सर और सम ऑफ योर mentors must have explained you how do you create the git repository and everything, and every day whatever work that you have done you should make a logical commits there. जब लैब फैकल्टीज को टाइम होता है तब वो अपने टाइम के हिसाब से जाके वहां पर चेक कर लेते हैं. आप लोगों ने इसको बार बार चेक करना एक्सपेक्टेड नहीं होता है. हम लोग कर लेते हैं बट एट द एंड वी टेक काइंड ऑफ वाइवा और समथिंग लाइक दैट जस्ट टू इंश्योर दैट ये लैब असाइनमेंट आप लोगों ने किया है क्या. If you could not explain it at the time, it only means that you are done a copy and paste. So you need to ensure that all the lab assignments that you are doing, you are understanding them. You are understanding them, and then you are doing it. Definitely, you can take a help from your your peers. You can take a help from the faculty. You are most welcome. But आप help किसी से भी ले लो, but copy paste मत करना. I repeat once again, copy paste मत करना. Please understand that. And that is the reason you should stay focused onto this. And then you go ahead. We talk about internals. As far as internals are concerned, internals is of 20 marks. A total 100 marks हुए ना. Now mathematics कभी-कभी मेरा गड़बड़ हो जाता है. So it's a 20 marks, and 20 marks of this is nothing but MCQ exam. This MCQ exam and this lab exam, both the things will be conducted at the end of the module. What I said, lab exam and MCQ, what is that, MCQ internal exam, both will be conducted nearby end of the module. When I say nearby end of the module, not necessarily on the last day of module, it might be on the second last day of a module as well. That is absolutely possible. Absolutely possible. This will be taken care. So this is a kind of idea. I'm saying that it is a evaluation इस मॉड्यूल का ऐसे होने वाला है. आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे, feel free to post the questions. I will take up your questions on a logical break.
पहले मुझको एक बार पूरा एक्सप्लेन करने दो व्हाट ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड देन apart from this, as I said that there is no separate time for the exam preparations. There is no separate time for the, what is that, neither separate time for the exam preparation nor separate time for the lab exam preparation, no separate time for the campus preparation. So we want to start our all preparations side by side, probably on a first second day of the module. And that is what we start calling it as a interview preparations as well. Interview preparations as well, we will take care. Even every module, again मैं सिर्फ, रुको जरा, मैं सिर्फ डेटाबेस के मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं. सनबीम में जब भी कभी मॉड्यूल होता है, ये हमारा टीचिंग पैटर्न है कि हम लोग मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें कवर करते हैं. और जब सारी चीजें कवर करते हैं तभी हम लोग कहते हैं कि मॉड्यूल खत्म हो गया. नहीं तो हम लोग ये नहीं कहते कि मॉड्यूल खत्म हो गया. सो मॉड्यूल खत्म होने का मतलब है आपका पूरा सिलेबस खत्म होना, आपका इवैल्यूएशन खत्म होना, इंटरव्यू के प्रिपरेशन खत्म होना. लेकिन इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में क्या होता है, प्लीज नोट दैट देयर आर सम सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस. अब बोला सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में कौन सी बड़ी बात है, वैसे तो इंटरनेट के ऊपर हजारों लाखों इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑन एनी सब्जेक्ट यू टॉक. यस आई नो, इंटरनेट के ऊपर हजारों लाखों सब्जेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. दीज क्वेश्चंस आर बिट डिफरेंट. These questions may not be, very difficult kind of questions, but these questions are selected as like most commonly asked interview questions into the CDAC campus. I repeat once again, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग इंटरनेट से नहीं उठाते. इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें मिल जाती है. एंड टू बी फ्रैंक, अगर आप लोग इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके कोर्स का कोई भी एक मॉड्यूल पढ़ने के लिए आपको 6 महीने चाहिए. करेक्ट? So that is not practically possible. इंटरनेट के ऊपर आपको जो भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, they are vary into the nature, because few questions are asked to the fresher, few are asked to the 2 years experience, few are asked to the 5 years experience, few are asked to the 10 years experience, and obviously the question का level बदलता रहता है. So these are the questions which we collected from our ex-students who are placed, and then after discussing with them, after taking down the questions from them कि तुझको कौन सी कंपनी में क्या क्या पूछा गया था. सो डेटाबेस के ऊपर क्या पूछा गया था, जावा के ऊपर क्या पूछा गया था, नोड.जेएस के ऊपर क्या पूछा गया था. तो हम लोग ये ढूंढ के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं. एंड देन यूजुअली आफ्टर एवरी 1-2 ईयर हम लोग ये डेटाबेस हमारा अपग्रेड करते रहते हैं कि चलो यार नए क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं, चलो इस क्वेश्चंस को अभी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे. सो दीज क्वेश्चंस आर मोर टारगेटेड टूवर्ड्स कि कंपनी सीडैक के स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है, हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या होता है और आपको क्या क्या आता है. राइट? तो सर इस इंटरव्यू क्वेश्चन का प्रिपरेशन में क्या करना है, देयर आर 2 इवेंट्स. योर कोर्स कोऑर्डिनेटर विल एक्सप्लेन यू इवेंचुअली. वन इज कॉल्ड एज रैपिड फायर इवेंट, where the student practice with each other how to answer interview questions. And second thing usually we call it as a hot seat activities, where probably I will be with you and we will discuss how the thing should go, how the answer should be given in an interview, and probably a kind of a practice that we can do. So जब यहाँ पर जो कुछ भी मैंने मेंशन किया है 1 2 3, ये जब सब कुछ हो जाएगा, then we can say that yes हमारा डेटाबेस का मॉड्यूल कंप्लीट हुआ. राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू कि हम लोग क्या करने की कोशिश करने वाले in this whole module. I hope this is clear. Now I'm just going on to your questions. Let me read the questions once and then let me answer one of them. So a couple of questions that we have got. One of the question, Vishal is asking that normalization, ER diagram and everything हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? 100% पढ़ने वाले हैं. We will be learning normalization, chords rules, ER diagram, normalization कैसे करते हैं, एक्चुअली प्रोजेक्ट का उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो डोंट वरी. But I repeat once again, the CDAC course is more of practical oriented course. So even though we'll be learning everything, my primary focus will be doing maximum practical, writing maximum queries. ये मेरा first level focus रहेगा. Obviously conceptually everything that we will learn it, no doubt on that. We are not going to leave anything. जो कुछ भी आपके सिलेबस में मेंशन किया होगा वो तो हम लोग पढ़ेंगे,
यू टेक इट ग्रांटेड, 2-4 चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, नॉट अ बिग डील। यस भूषण, 6 months by 12 hours। 12 hours आपने शायद काउंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, हर दिन के 24 hours होते हैं, सो यू कैन थिंक ऑफ 12 hours थोड़ा कम होता है अभी के लिए, ठीक है 12 hours काफी है, बट यू कैन गो अहेड, एक्सीड इट फर्दर, प्लीज स्टडी। Next, Rahi is asking the question, end of the module or end of the whole course? CDAC course and exam is at the end of the course. जो lab exam और internal exam हम लोग लेंगे, it is at the end of the module. I hope it is clear. गौरव का कुछ क्वेश्चन है, will evaluation of the assignment will be done by the same staff member as of case study? Gaurav, you are asking positively or negatively? Anyway, just to answer you, the lab faculties or lab mentors may change from module to module, and every module some lab mentor will be assigned to you. Usually lab mentor का नाम आपका जो शेड्यूल पब्लिश किया जाता है उसके अंदर असाइन होता है कि आपके ग्रुप के आगे कौन सा लैब मेंटर है. So you need to see to it that you need to create your own Git repository and you need to add that lab mentor into your Git repository of that particular project. Please take care of it, Gaurav. I hope this is clear. Lab exam and lab assignments both are of 40 marks. No, it is combined of 40 marks. Lab exam plus lab assignment. Weightage we will let you know. Correct? So you need not to worry about it at the moment. We will be doing any mini project over here like C? Unfortunately not, because as far as database is concerned, सिर्फ database में कोई project नहीं होता है. Please understand, सिर्फ database में कोई project नहीं होता है, ऐसा कोई option नहीं होता है. मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ database में कोई project नहीं होता है. जितने सारे projects होते हैं वो database is one of the portion of that project. करेक्ट? तो सिर्फ डेटाबेस में मिनी प्रोजेक्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो जो हमने हमारे जो एक्चुअल टेक्नोलॉजीज रहेंगे, लेट्स से लाइक यू से मीन टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ स्टफ, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट, जो जो टेक्नोलॉजी है, जावा है या मर्न है, वहां पर हम लोग मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे, नॉट इनटू द डेटाबेस. ऑब्वियसली वहां पर जब मिनी प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको डेटाबेस डिजाइन करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. What is expected from us? Wow, what is a great question. What is expected from us? Just follow the instructions, everything that we are giving to you. And second, very important, please interact. That is another important. Whatever is you want, like you are understanding, let us know. You are not understanding, let us know. And let us know in time. Do not hesitate. Do not shy asking questions. Not necessary that every question I will answer immediately. There are quite good chances that you might be asking some question which is too advanced. I will tell you, please wait, hold on. ये आज का क्वेश्चन नहीं है, जब हम लोग आगे जाएंगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. So, but you do not hesitate in asking the question. Do not even shy. Sir, मेरा क्वेश्चन बहुत ही silly question होगा तो you don't worry. So even though you are having silly questions, you are still most welcome. So जब भी आप लोग पहली बार पढ़ते हो, it is really, I definitely expect that people are asking me silly questions, because when I learn a technology for first time, I remember my old days. ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक पहले दिन पे हर एक टेक्नोलॉजी मुझको बहुत अच्छे से समझ में आती थी, ऐसी कोई बात नहीं है. सो इवन आई हैव आस्क्ड प्लेंटी ऑफ stupid question to myself, to my teachers, to my books. So I just ask, and those people give me answer, so that I'm ready in front of you and I can talk. So definitely do not hesitate, please ask, no problem. कोर्स एंड एग्जाम के बारे में डिटेल्स आपको बाद में बताए जाएंगे. हर मॉड्यूल का एक एक पेपर होता है और उसका शेड्यूल आने में बहुत टाइम है. समवेयर इनटू द जनवरी फरवरी यू कैन एक्सपेक्ट अ शेड्यूल फॉर यू. एग्जाम के 2 वीक पहले शेड्यूल आता है, तो अभी से उसके बारे में बहुत डिस्कस करके फायदा नहीं है. एग्जाम का पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इट इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इतना आपके लिए काफी है. जयदीप का क्वेश्चन है, लैब एंड इंटरनल्स के मार्क हमें एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल पता चलते हैं या एंड ऑफ द कोर्स? नहीं, एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल. एग्जाम होने के बाद में यू कैन एक्सपेक्ट 48 आवर्स मैक्स. एग्जाम होने के बाद में 48 आवर्स मैक्स वी ट्राई टू पब्लिश ऑल द स्कोर. सो प्रॉक्टर्ड एग्जाम इज फॉर 20 मार्क्स. अमित, दिस विल चेंज फ्रॉम मॉड्यूल टू मॉड्यूल. कितने मार्क्स का प्रॉक्टर्ड होगा, कितने मार्क्स असाइनमेंट को दिए जाएंगे, कितने मार्क्स मिनी प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे, दैट विल चेंज फ्रॉम मॉड्यूल टू मॉड्यूल, एंड यू विल गेट टू नो. So don't worry about it. I'm just going ahead. I mean, do we get homework for the practice? Yes, you will get homework for the practice.
लॉट ऑफ होमवर्क फॉर द प्रैक्टिस, रादर आप लोग थक जाओगे, इतना होमवर्क आने वाला है. जस्ट गिव मी सम टाइम, लेट द मॉड्यूल बिगिन, एंड यू प्लीज फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ. एंड इफ यू फील दैट कि असाइनमेंट्स आर लेस, let us know, we will give you a bit more assignments as well. So Prasad, go ahead, there will be lot of assignments will be available, you are most welcome. कम पड़ जाते तो हमको बताना, हम लोग और देंगे. Is passing is module wise or entire course? Module wise. Will we receive the PDF format book for the various module along with the preparation MCQ? PDF format book. प्रिपरेशन एमसीक्यू, पहली चीज तो हम लोग प्रिपरेशन एमसीक्यू हम लोग किसी को देते नहीं है. यू कैन जस्ट गो अहेड, फाइंड आउट, गूगल के ऊपर जाओ, सैन फाउंड्री नाम का एक साइट है, इंडियाविक्स नाम का साइट है, गूगल के ऊपर जाओ, सर्च करो MySQL एमसीक्यू, RDBMS एमसीक्यू, हजारों लाखों क्वेश्चंस है. एंड आई रियली डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन कॉपिंग फ्रॉम देयर एंड पेस्टिंग फॉर यू. सो देयर विल नॉट बी एनी preparation MCQ we will be giving it. It is recommended that you people go on a daily basis and solve few questions, 1 or 2 questions, that should be more than sufficient. थोड़ा सा मॉड्यूल उसके लिए एटलीस्ट 50% पूरा होने दो, so that you understand few things from that, right? Is the first thing. As far as book is concerned, to be frank, as I said that मैंने आज तक RDBMS के लिए एक भी बुक नहीं पढ़ा. I learned RDBMS for first time for year 2007, and 2007 last 13 years, like whatever I have worked in RDBMS, I never need any kind of book apart from the documentation of MySQL. MySQL का documentation, Oracle का documentation, that is strong enough. हाँ, उससे documentation कैसे पढ़ना है ये मैं आपको over the period बताऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ. अगर आपको PDF का कोई बुक चाहिए just for sake of psychologically handling it, no problem, no problem. I'll just find out some book for you and I can give you link. You can download it from there. I don't bother. But मैंने खुद ने कभी पढ़ा नहीं है, that is for sure. सर अगर प्रॉक्टेड एग्जाम में फेल हुए तो, फेल हुए तो फेल ना, फेल हुए तो मतलब प्रॉक्टेड एग्जाम में फेल होंगे तो नॉन प्रॉक्टेड एग्जाम नहीं लेते हम लोग. सो फेल इज फेल. सो यू विल बी प्रोबेबली समवेयर eligible for re-exam, eligible for re-exam, and as you are eligible for re-exam, 20% marks will be deducted. So see to it that you are most comfortable on a day of proctored exam. Correct? Can we interact with the lab mentor after 8 p.m. or hold it for tomorrow morning? See, usually जो आपके lab mentors है उनको भी अपना घर है, उनको भी अपना family है. You can definitely, you have any question, please post it on your official Zoom group. जो आपका Zoom का जो सब ग्रुप आपको दिया गया है लैब का, please go ahead, post it there. If at all faculty returns back, he will respond. If not, definitely in the morning. Ideally, when you should call the lab faculty, I guess we made it very clear on the day one. जो आपका लैब का जो प्राइम टाइम होता है, the prime time is a time where you should call the lab faculty on Zoom. Where you should call the lab faculty on the Zoom. Rest of the time, feel free to post the question on your group. Even though faculty is not available, some of your friends might be available. Even they can help you. As long as it is technical discussion, you are most welcome onto the group. No problem. Aman ka question hai, any material will be provided by you, some kind of notes, or we have to write on our own. As far as lectures are concerned, अभी आपको दिख रहा है ये जो कुछ भी मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो कुछ भी कर रहा हूँ, everything I'll share with you. Have a look at this. All slides are prepared. जो जो कंसेप्ट चाहिए वो सब कुछ मैंने स्लाइड्स के ऊपर डाल के रखे हुए, प्लस जो एक्स्ट्रा डायग्राम चाहिए टू एक्सप्लेन यू. डोंट वरी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. जो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आई विल शेयर विथ यू. बट आई स्टिल रिकमेंड कीप अ नोटबुक विथ यू, keep a pen pencil with you. If you find something is important but I have not written over here, you can make your own short note there. You are most welcome. I hope this is very clear, not only to Aman but everyone. Passing is based on a final score out of the 100 marks, or it is separate? It is an individual passing for theory, lab and internals. Okay, done. I hope enough of questions are done. अब हम लोग मॉड्यूल शुरू करें और कुछ पढ़े. क्या डेटाबेस पढ़ना है यार? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वी आर सीइंग दैट सर हम लोगों का सिलेबस MySQL RDBMS है. सो MySQL क्या है? MySQL RDBMS है. RDBMS क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. बट सर ये रिलेशनल DBMS क्या है? उससे पहले यू नीड टू हैव अ क्विक लुक at
what is DBMS? So what we will do is that we'll first take a look at what do you mean by DBMS. As I said that DBMS simply stands for database management system, a database management system. And what all DBMS is doing, let us talk about that, and how it is doing, let us talk about that as well. Let us just go ahead. So I'm saying that any enterprise level application need to manage the data. So what exactly you want to say? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका पहला दिन है आज का, मेरे को पता है आपको याद होगा, बट स्टिल मैं याद दिलाना चाहता हूं और मैं बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा. हमारा कोर्स है डैक कोर्स, एंड डैक स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग. तो सर डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग, इस कोर्स में हम लोग क्या करते हैं? ऑब्वियसली एडवांस कंप्यूटिंग करते हैं. सर एडवांस कंप्यूटिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. सर हम लोग कैसे एप्लीकेशन डेवलप करते हैं? हम लोग इंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. So what do you mean by enterprise application? Enterprise applications are the applications used by the enterprises. Enterprises simply means big organization. Big organizations like State Bank of India, big organization like LIC, big organization like Citibank, big organization like Oracle, big organization like Google, Microsoft, big organization, Geo, or like this kind of, these are all big organization. Now, if it is big organization also have big problems. Please understand. And then these big problems we want to solve or at least simplify using our softwares. And the softwares which we are going to develop for that purpose, we are saying that these are the enterprise level applications. These are the enterprise applications. And then, तो सर ये इंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब हमने जो अभी केस स्टडी बनाया, वो मिनी प्रोजेक्ट बनाया, उसके जैसा था? नहीं, वो मिनी प्रोजेक्ट था, वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं था. लेट मी टेल यू गाइज, any enterprise application, let it be the banking sector, let it be the healthcare sector, let it be the finance sector, let it be any sports sector or whatever you talk about, आप किसी भी सेक्टर में जाओ, कोई भी इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन डेटा के बिना कंप्लीट नहीं होता है. तो क्वेश्चन इज दैट तो सर ये डेटा के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया क्या? यस, डेटा के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले कोई लोग प्रोजेक्ट करते ही नहीं थे या डेटा मैनेज होता ही नहीं था. होता था. लेट मी टेल यू दैट इन अर्ली डेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, the programmers store data into the files and do operations on it. So what exactly you want to say? अभी आप लोगों ने केस स्टडी डेवलप किया है, मिनी प्रोजेक्ट डेवलप किया है लाइब्रेरी का, और आप लोगों ने नोट किया है, आपने उसके अंदर बहुत सारा डेटा मैनेज कर लिया है. एक कौन कौन सा डेटा मैनेज किया आप लोगों ने? आपने वहां पर यूजर्स का डेटा मैनेज किया है, बुक्स का डेटा मैनेज किया है, बुक कॉपीज का डेटा मैनेज किया है, आपने इश्यू रिकॉर्ड्स मैनेज किए, आपने पेमेंट्स मैनेज किए, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड आप लोगों ने इंसर्ट करवाए, सारे के सारे रिकॉर्ड आपने रिट्राइव करवाए, सर्च करवाए, एडिट करवाए, ये सब कुछ आप लोगों ने वहां पर किया हुआ है. तो सर इट वॉज नॉट अ एंटरप्राइज एप्लीकेशन. मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज नॉट अ एंटरप्राइज एप्लीकेशन, इट इज अ वेरी बेसिक लेवल एप्लीकेशन, and you spend your majority of time in doing file handling there. कोई भी ऑपरेशन हो, फाइल के अंदर जाओ, वहां से डेटा निकालो, कुछ ऑपरेशन करो, वापस इसको डंप करो. यही तो आप लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट में किया हुआ है, isn't it? Yes, so whole data you people have managed with a bare files. Okay, that is good. But let me tell you that ये जो डेटा आपके पास है, this data is highly application specific. तो आपने जैसे डेटा फाइल में रख दिया, सो यू डोंट कॉल दैट सर ये अब मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया क्या? नहीं, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाया है. आपने क्या बनाया है? आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के लिए जो डेटा चाहिए उतना डेटा आपने मैनेज किया है. आपने आपके यूजर्स का डेटा मैनेज किया है, आपने आपके बुक्स का डेटा मैनेज किया है, आपने आपके पेमेंट्स का डेटा मैनेज किया है. आपने इन जनरल कोई डेटा मैनेज नहीं किया है. योर होल डेटा was application specific. So your project was having, listen carefully, your project was definitely having a data handling part, but that was not generic, that was very specific to your application. Correct? वैसे आपका ही एप्लीकेशन ऐसे करता है, ऐसी कोई बात नहीं है. यू मस्ट हैव सीन दैट आजकल अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो अपने खुद का डेटा खुद मैनेज करते हैं. लाइक यू गॉट टैली सॉफ्टवेयर,
लेट्स से एड्रेस बुक सॉफ्टवेयर और एनी अदर सॉफ्टवेयर्स। आप लोगों ने शायद देखा होगा वो डीमार्ट वगैरह उनके खुद के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या फिर आप लोग मेडिकल स्टोर में जाते हो उनके खुद के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो दे आर राइटिंग देयर ओन काइंड ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर्स, एंड दोज कस्टम सॉफ्टवेयर्स trying to store the data in more or less customized format. ये आप लोग करते रहते हो, that is possible. However, इनको सबको आप लोग डेटाबेस नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। तो सर डेटाबेस कहां पर आता है? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहां पर आती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तब आती है जब आप लोग बात करते हो कि योर एप्लीकेशन इज डिजाइंड टू हैंडल जेनरिक डेटा। अगर इन फ्यूचर में एक ऐसा एप्लीकेशन लिखता हूं जिस एप्लीकेशन में मैं कहूंगा कि किसी भी टाइप का डेटा आने दो, आई एम रेडी टू हैंडल दैट, आई एम रेडी टू हैंडल दैट। यू डिसाइड कि कौन से टाइप का डेटा रखना है, यू डिसाइड कि कौन से टाइप का डेटा रखना है। एंड इफ यू आर एबल टू राइट अ सॉफ्टवेयर विच कैन हैंडल, विच कैन स्टोर, विच कैन रिट्राइव डेटा ऑफ एनी टाइप, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। और गुड थिंग इज दैट ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग डेटाबेस बनाने वाले लोग नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, हमारा कोर्स है डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग। तो हमारा काम क्या है? हम लोगों को इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन बनाने हैं, और इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन में डेटाबेस तो इन्वॉल्व होता ही है। अगर इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन में डेटाबेस इन्वॉल्व होता है, माय क्वेश्चन इज दैट who is going to invest the time in like every time writing the data into the file and retrieving from that file? तो हम लोग उसमें कष्ट नहीं करते। We said that we will use some of the ready-made database management softwares, and that is what I'm saying that ये requirement over the time build हुई as data management become more common job for your application development. The database systems were developed to handle the data efficiently. एंड देन एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि एज अ प्रोग्रामर यू नीड नॉट टू वरी कि मैं डेटा सेव कैसे करूं, रिट्राइव कैसे करूं। मैंने कहा ना, आपका जो केस स्टडी का पूरा प्रोजेक्ट था, दैट होल प्रोजेक्ट इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड हाउ टू राइट इन फाइल एंड हाउ टू रीड फ्रॉम फाइल, हाउ टू राइट इन फाइल एंड हाउ टू रीड फ्रॉम फाइल, हाउ टू राइट इन फाइल एंड हाउ टू रीड फ्रॉम फाइल। एंड देन जहां जहां पर लॉजिक था, वैसे लॉजिक काफी कम इन्वॉल्व है। हाउ टू इश्यू द बुक or how to retrieve the book. I know that logic is there, but it is very less logic and more of file handling. अब मैं क्या कह रहा हूं, एज अ अगर आप लोग डेटाबेस के रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आप लोग किसके ऊपर फोकस करते हैं? आप लोग शायद फोकस करते हैं ऑन योर बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक, ना कि मैं फाइल के अंदर कैसे राइट करूं, मैं फाइल के अंदर से कैसे रीड करूं। दैट वुड हैव बिकम, क्या बोलते हैं, जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ा होता जाता है, अगर आप लोग इसके ऊपर सोचने लगोगे तो मेन लॉजिक के ऊपर कैसे सोचोगे? आप लोग अभी भी देख सकते हो आपके लाइब्रेरी के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप लोग और भी इंप्लीमेंट कर सकते थे एज फार एज फीचर्स आर कंसर्न। बट अवर टाइम वॉज वेरी लिमिटेड। वी स्पेंड अवर मेजोरिटी ऑफ टाइम इन डूइंग फाइल आयो। अगर काश ये फाइल आयो कोई रेडीमेड मेरे लिए करता, एंड देन आई कुड हैव फोकस ऑन टू माय मेन कोर लॉजिक कि मैं बुक कैसे इशू करूं, मैं बुक कैसे रिट्राइव करूं, मैं लोगों को मंथली पेमेंट लोगों से कैसे लूं, मैं लोगों से फाइन कैसे कलेक्ट करूं, या फिर और भी कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज दैट यू वांट टू गिव इट टू योर एंड यूजर्स, करेक्ट, सो दैट you have got more and more customers coming down to your library and you get more and more revenue. Please understand that the whole software industry is revolving around money. What is important? What is important? It is important that you earn few dollars. That is important. It is not important कि आपको C आता है, C++ आता है. Who cares? आपको जावा आता है या डेटाबेस आता है? हु केयर्स? सर आपको फुल स्टैक आता है या डॉटेड आता है? हु केयर्स? What is important that you should be in a position to make some money. So finally, are you able to write some really good softwares which can be used into the industry and you can generate the revenue from that? So obviously, और जितने कम से कम टाइम में आप लोग सॉफ्टवेयर बनाओगे, उतने ज्यादा सॉफ्टवेयर आप लोग बना पाओगे. You can work into like a kind of bigger teams, and you can try to get little more profit. This is what all you're looking for. और अगर हर बार हर एक प्रोजेक्ट के लिए आप लोग फाइल आयो करते बैठोगे, तो आई गेस जिंदगी भर आप लोग एक आध इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी ठीक से नहीं बना पाओगे. प्लीज अंडरस्टैंड दैट होल कंसेप्ट इज रिवॉल्विंग टूवर्ड्स कि आप लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा
more sophisticated, more complicated kind of softwares develop करो where you can like earn money. I hope आजकल के जनरेशन को मैंने सुना है, they understand dollars better than anything else. So मैं डॉलर्स की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. And this is where the databases come into picture. Databases says that तुम्हारे enterprise application data के बिना नहीं हो सकता. I can give you a full-fledged support for the databases. I can give you full-fledged support for handling a data. You do not worry about your data. Data is safe with me. I will give you the efficient processing of a huge amount of data, and you just manage your business logic. You focus on a business logic. You do not invest your time. You do not invest your energy into this. Obviously, databases are ready-made. Correct? So, पुराने जमाने के कुछ databases थे, like Fox Pro, like DBase, like Excel, and etc. etc. Yes, they were there. And then, तो सर डेटाबेसेस मेनली क्या ऑपरेशन देते हैं? वही करते जो आपने खुद के सॉफ्टवेयर में किया था. If you recall that CRUD operation, you can insert some record, you can retrieve some record, search some record, you can modify some record, you can delete some record, and this is basic minimal operations. ये सारे डेटाबेसेस सपोर्ट करते हैं. करेक्ट. फॉक्स प्रो डीबेस ये काफी आउटडेटेड हो गए, आजकल आपको देखने को भी नहीं मिलते. बट आई एम वेरी श्योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कभी भी आज भी शायद आपके मशीन के ऊपर होगा, where you see that you can arrange the data and you can put it there. So at least some idea that you can get it. Going ahead. तो सर ये ट्रेडिशनल जो डेटाबेसेस थे वो कैसे थे? आई एम सेइंग दैट योर ट्रेडिशनल डेटाबेसेस वेर मोर और लेस दे आर फाइल बेस्ड डेटाबेसेस. मतलब क्या? उनका पूरा डेटा इंटरनली फाइल में स्टोर होता था. अभी आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा होगा. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डेटा स्टोर होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डेटा स्टोर होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा कहां पर स्टोर होता है? एक्सएलएस फाइल और एक्सएलएसएक्स फाइल. एक्सएलएस फाइल और एक्सएलएसएक्स फाइल ऐसे फाइल में आपका डेटा स्टोर होता है. समथिंग दैट दिस ट्रेडिशनल डेटाबेसेस आर मोर और लेस फाइल बेस्ड काइंड ऑफ डेटाबेसेस. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yeah. Okay. And then going one more step ahead, I'm saying that it is, let's say, but I'm saying that these databases are little less secure. Now you ask the question, so who said that it is less secure? Do you believe that your Excel is secured one? आपके Excel में किसी टाइप का सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं क्या? डू यू नो समथिंग कि Excel के अंदर हम लोग किसी टाइप का सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं क्या? किसी टाइप का सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं क्या? यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग समवन. नॉट मेजर सिक्योरिटी, नॉट मेजर सिक्योरिटी, बट डेफिनेटली आप लोग एक्सेल फाइल जब सेव करते हो तो आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हो, आप उसको पासवर्ड दे सकते हो. बट प्लीज नोट एंड अंडरस्टैंड दैट गिविंग अ पासवर्ड people may not be able to read the file, people may not be able to see the. पवन मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली. वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइल बेस्ड सिक्योर डेटाबेस ओनली. और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेल फाइल ये फाइल बेस्ड डेटाबेस है, उसको आप लोग सिक्योरिटी दे सकते हो, बट योर सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ लिमिटेड सिक्योरिटी. सिर्फ पासवर्ड है, भले आपके पास पासवर्ड, एग्जैक्टली आई एम सेइंग दैट पासवर्ड से आप लोग कंटेंट नहीं देख सकते हो, लेकिन एनीवन हु गेट एक्सेस टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम ही कैन डिलीट योर होल एक्सेल फाइल. तो आप बोलोगे सर मैंने किसी को डेटा दिखाया नहीं, और लेकिन डेटा तुम्हारे लिए भी नहीं बचा, उसका क्या करोगे? आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग दैट. तो यू कैन डिलीट द होल फाइल. सो नाउ समवन सेज दैट सर हम लोग एक्सेल फाइल को हाइड कर देंगे. अरे हाइड करना ये एक्सेल का फीचर नहीं है. हाइड करना किसका फीचर है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है. मैं बता रहा हूं, मैं ओएस की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सेल की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं. एक्सेल या फॉक्स प्रो या डीबेस, आई से दैट देयर सिक्योरिटी इज देयर, but very limited security, very limited security. Typical problem with this kind of traditional databases, typical problem with this traditional databases, file based databases, is that this is a single user database. And what is a single user database? What is single user database? I'm saying that, let's say that I have got somewhere a network, and somewhere on a network I have kept an Excel file. Somewhere on a network I have kept an Excel file. I'm saying that network file system, and I'm keeping a Excel onto that. And then there can be multiple users जिनको इस network को access है. There can be multiple users जिनको इस network को access है. So जिनको इस network को access है, those people can come down and try to access the Excel file. आप लोगों ने कभी इस environment में काम नहीं किया होगा,
लेकिन मैं वापस से मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ, मैं गूगल स्प्रेडशीट की बात नहीं कर रहा हूँ. गूगल स्प्रेडशीट इज नॉट एक्सेल. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी स्टूपिड क्वेश्चन ऑन अ गूगल स्प्रेडशीट, प्लीज. मैं एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ. एंड एक्सेल शीट समवेयर आई हैव केप्ट इट ऑन लाइक अ कॉमन ड्राइव, कॉमन नेटवर्क, जहां से दोनों यूजर को एक्सेसिबल है. जब दोनों यूजर को एक्सेसिबल है, you find that if one user has opened it, if one user has opened it, this file, this file will get kind of locked. This file will get kind of locked, and since this file is locked, now the other user will not be able to open that file, at least for writing. At least for writing. I'm saying that this is limited. By default, these files are designed to be accessed. Am I audible now? Yes, sir, audible. Yeah, look like there was a network drop. Give me a minute. Let me just switch it to another network and we will continue once again. 1 minute, please. Let me share a screen. Okay. Yes, it is going good. And I'm hoping that my network will be able to work. Meanwhile, you have any questions, please post. Jab tak, I hope my slides are getting opened once again. Absolutely true. Jaideep, that is true. Suyog, whatever you are saying is correct. Like Nitin sir is sharing group-wise evaluation Excel file, but again it is like an Excel file और आप लोग मेल के थ्रू शेयर कर रहे हो. नेटवर्क के ऊपर शेयर करना is something different one as compared to sharing onto this. So अभी हम लोग जो email के ऊपर शेयर कर रहे हैं, that sharing is always different as compared to the sharing onto this. Okay. Don't know what is the problem. Give me a minute. थक गए. Not good. There is a problem. Yes, Shubham, now this is better. Whatever you are saying is correct. What we'll do is that it look like there is some network issues there. What we'll do, I'll handle 1 or 2 questions. We'll take a break for 5 minutes. Meanwhile, I'll just handle the network and we will resume back from there. What is business logic? Business logic is nothing but the core functionality that you want to implement. What is the core functionality that you want to implement? अगर आप लोग आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट देखते हो,
लाइब्रेरी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है कि एक्चुअली बुक्स यूजर को इशू करना, यूजर से बुक्स लेना, वापस से रिटर्न करवाना, या फिर एक्चुअली उससे पेमेंट लेना, फाइन या ऑल दैट काइंड ऑफ फंक्शनलिटी। इसको हम लोग हमेशा कहेंगे इसको हम लोग हमेशा कहेंगे कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस लॉजिक, द कोर बिजनेस लॉजिक। अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा और समथिंग लाइक दैट, इसको आप लोग बिजनेस लॉजिक कहोगे। अगर आप लोग रिटेल सेक्टर में जा रहे हो तो वापिस से आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा और लाइक मैनेजमेंट कैसे होगा, आपको एक्चुअल डेटा के ऊपर क्या प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, सो दैट डेटा प्रोसेसिंग पार्ट इनटू योर एप्लीकेशन, नॉट स्टोरिंग एंड रिट्राइवल, the actual operations on the top of it. This is called as business logic. I hope Bilal, you got the idea, right? Hey, we will take a break for 5 minutes, 10 minutes, and after the break, we will continue back. मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो दैट इवन दो आई एम विजिबल टू यू, माय स्लाइड्स आर नॉट विजिबल टू यू, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट। सो यू कैन टेक a 10 minutes break. By the time, yes, your time starts now. Take a break, I'll take it. I hope I'm audible. Yes, sir, audible. So we can resume there, and this is not good. So everything was working well. Suddenly it is again stopped. This is too much. Yeah. So I was trying to tell you that our database is file-based databases. These are like less secure. Second thing, we are saying that it is like a single user database, multiple user trying to edit it at the same time. It is not really possible because the file get locked immediately. The file is getting locked immediately. So that is, yeah. File is getting locked so that only one user can access, another user cannot access directly. That is another problem. Apart from that, I'm saying that it is non-distributed. I'm very sure you must never have heard that one Excel file is divided into the 3 files on 3 different machines. So एक ही फाइल है लेकिन वो आधा फाइल इधर है, आधा फाइल इधर है और आधा फाइल इधर है। सो 3 अलग-अलग मशीन्स के ऊपर आपका एक ही फाइल स्टोर किया हुआ है। यू एवर हर्ड ऑफ इट? ऐसा कभी नहीं होता। आप उसके 3 कॉपीज स्टोर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्रेक द फाइल एंड ट्राई टू स्टोर इट onto the multiple places. This is not possible practically. So it is not distributed. जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको एक ही मशीन के ऊपर रखना पड़ेगा अक्रॉस द मशीन। ये पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट सर्वर काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इसके अंदर नहीं चलता है। लेट इट बी एक्सेल फाइल, लेट बी फॉक्स प्रो, लेट बी डीबेस और दिस काइंड ऑफ सिंपल डेटाबेसेस। Amount of data that you can deal with is again limited. I say that hardly megabytes of data that you can handle. If you start going like gigabytes or terabytes, you'll find that it will really trouble you a lot. The performance wise halat kharab ho jata hai, so you are worried about that. At the same time, complicated relation management, and I'm very sure you must have experienced this जब अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट का आपने खुद का सॉफ्टवेयर बनाया था। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वो यूजर जो है वो यूजर पेड है या नहीं वो देखना है। उस पर्टिकुलर बुक के मल्टीपल कॉपीज अवेलेबल है या नहीं देखने हैं। उसके बाद में आपको पर्टिकुलर बुक इश्यू करना है,
अगर वो यूजर पेड होगा तो सो यू फाइंड दैट ये आपका जो डेटा था वो एक फाइल में नहीं था, मल्टीपल फाइल्स में था, और फिर आपको सब जगह पे चेक करना पड़ रहा था यार वेदर द करंट यूजर इज पेड और नॉट। फिर द करंट यूजर उसका बुक कॉपी का स्टेटस अपडेट करो, फिर इश्यू एक रिकॉर्ड के अंदर आप उसकी जाके एंट्री करो। ये जो आप लोग चेकिंग कर रहे थे अक्रॉस मल्टीपल फाइल, ये आप लोग कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई एम सेइंग इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड you need to write it into the application. A lot of number of lines of code you need to write it in an application. These are some of the typical limitations, or you can say disadvantages of your file based databases. I hope someone who was asking the question, sir file based databases के problem क्या है, ये मैंने आपको file based databases के problem बताया, ये मैंने आपको traditional databases के problem बताया. I hope you have visualized that. Now as you understood that these are so many problems as far as the databases are there, so sir how RDBMS solve these problems? Let me first of all tell you RDBMS, before you learn something extra, you understand that RDBMS is a DBMS. RDBMS इज अ DBMS, मतलब उसके अंदर अलग क्या है ये बाद में ढूंढो, पहले कॉमन क्या है पहले ये समझो। तो जो कुछ भी ऑपरेशन आपको DBMS अलाउ करता था, ये आपको DBMS क्या ऑपरेशन अलाउ करता था? कैन यू रिकॉल विच ऑपरेशंस आर अलाउड बाय DBMS? Yes, DBMS was typically allowing you kind of a CRUD operations. तो अगर वो आपको CRUD ऑपरेशन देता था, तो यहां पर भी मैं वही कह रहा हूं रिलेशनल RDBMS में भी एटलीस्ट मिनिमल ये भी आपको CRUD ऑपरेशन देने वाला है, बट आई एम सेइंग दैट हेयर इट इज रिलेशनल इन नेचर. So what do you mean by relational in nature? What do you mean relational in nature? I said that your data will be arranged into, let's say, multiple tables. Now your data will be arranged into the multiple tables, and tables के अंदर it will like a multiple rows and multiple columns, and then these tables will be related to each other. These tables will be related to each other. So नहीं समझा? वापस से we can take an example of a library management. As you are taking example of library management, try to visualize that. फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट अभी आप लोगों ने 4-5 फाइल बनाए, 5 फाइल के अंदर आप लोगों ने डेटा रखा। मैं कह रहा हूं 5 फाइल के अंदर डेटा रखने की जगह पे अगर आप लोग आरडीबीएमएस के ऊपर काम करते हो, आरडीबीएमएस सर्वर में काम करते हो, आरडीबीएमएस सर्वर सेज दैट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ फाइल 5 फाइल्स, व्हाई डोंट यू क्रिएट 5 टेबल्स? You create a separate table for the users, you create a separate table for the issue records, you create a separate table for the somewhere you can say that books. Yes, you can have separate table for the copies, you can have separate table for the copies, you can have separate table for the payments. तो आप लोगों को जो कुछ भी डेटा रखना है, why don't you keep your data into the tables instead of keeping in a separate file? और जब लोग कहते हैं टेबल्स, तो यूजर्स के अंदर क्या क्या था? यूजर का आईडी था, यूजर का नेम था, ईमेल था, मोबाइल नंबर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका डेटा जितने यूजर्स होंगे उतने रोज होंगे, और जितने उसका डेटा था, जितने एट्रीब्यूट्स थे, आईडी, नेम, ईमेल, व्हाट इज दैट, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सारे उसके कॉलम्स होंगे। एंड दिस इज अ वे यू ट्राई टू अरेंज अ डेटा. नॉट ओनली दैट, यू आर टॉकिंग अबाउट बुक्स, ए बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, सब्जेक्ट, प्राइस, आईएसबीएन, ये सब कुछ आपके बुक के सारे डेटा है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट जितने बुक्स आपके डेटाबेस के अंदर होंगे 13 14 15 बुक्स, सो जितने बुक्स आपके डेटाबेस में होंगे उतने बुक्स, these are nothing but the rows. On the similar line, we said that one book can have multiple copies. As you say that one book can have multiple copy, so copy का ID, book का ID, उसका status, and etc etc. Now this sort of information you can have into the copies. Into the copies आपके पास वो information हो सकती है. And you know that while issuing, we issue kind of individual copies. Yes, we can issue individual copies. ये भी हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं. Possibility is that, and then one user can have let's say multiple payment, कौन से डेट के ऊपर पेमेंट किया था, फीस या फाइन के लिए पेमेंट किया था, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप लोग ऐसे मल्टीपल पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन रख सकते हो. सो दिस इज वेयर यू आर ट्राइंग टू कीप योर डेटा इनटू द टेबुलर फॉर्मेट. एंड वेट फॉर अ मिनट, you here you say that these tables are related. ये कौन सा पेमेंट कौन से यूजर का है? आई एम सेइंग दैट वन यूजर can have many different payments. A possibility is that one user
you can issue one user, you can issue multiple records. Correct? I'm saying that one book can have multiple copies. In each issue record, you are issuing one copy. You are issuing one copy, and so on and so forth. I'm saying that this is something I'm trying to tell you, that relations among the table. ये आपके पास टेबल है, डेटा आपका रोज और कॉलम के फॉर्मेट में आप लोगों ने एसोसिएट करके रखा हुआ है, एंड आई एम सेइंग दैट ये जो कुछ भी डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, टेबल्स आपको दिख रहे हैं, ये टेबल्स दे आर रिलेटेड. हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइल्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग फाइल्स नहीं यूज कर रहे हैं, फाइल्स की जगह पे हम लोग टेबल्स यूज कर रहे हैं. ये फाइल बेस्ड डेटाबेस नहीं है. टेबल इज काइंड ऑफ अ लॉजिकल एंटिटी इन विच वी आर ट्राइंग टू स्टोर द डेटा. आई होप अमन इट इज क्लियर. आई एम सेइंग दैट अर्लियर आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वहां पर अपने फाइल्स यूज किए थे, यहाँ पर हम लोग टेबल्स यूज कर रहे हैं. एंड यस, आवर डेटा इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इसको हम लोग कह रहे हैं. ओके, दिस इज नथिंग बट माय डेटाबेस सर्वर. और ये सारा डेटा हम लोग कह रहे हैं सर्वर के ऊपर रख रहे हैं. so, सर्वर के ऊपर मतलब हैव अ लुक एट दिस. आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट this is following the table structure. One, these tables are related to each other, and that relational capabilities are built in. आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है. आप एट ए टाइम एक क्वेरी फायर करके यूजर और उसके सारे पेमेंट्स ले सकते हो. आप लोग एक क्वेरी फायर करके बुक और उसके सारे कॉपीज ले सकते हो. आप लोग एक क्वेरी फायर करके एक यूजर और उसकी सारी इशू हिस्ट्री जो भी रिकॉर्ड्स है आप सारे के सारे फेच कर सकते हो, just by giving a single query onto the database, because these features are built in. These features are built in. अभी जो आप लोगों ने पापड़ बेले थे कि पहले इस फाइल में जाके ढूंढो, फिर इस फाइल्स में उस फाइल में जाके ढूंढो, फिर उस फाइल से जाके उस फाइल में जाके ढूंढो, ये जो कुछ भी आप लोगों ने प्रोग्रामेटिकली किया था, ये सारे कष्ट अभी आपको करने की जरूरत नहीं होगी. आई एम होपिंग कि आप लोग वो केस स्टडी जो हम लोगों ने किया था, मिनी प्रोजेक्ट कर किया था, आप उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो. हम लोगों ने जो कुछ भी किया था, क्वेरी मतलब प्रोग्राम. Query is nothing but small program that we are writing. Small programs that we are writing. So query मतलब asking a question कि मैं डेटाबेस को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यार मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, वो डेटाबेस सर्वर कह रहा है कि ठीक है मैं तेरे को डेटा भेज देता हूँ. So that is query is nothing but asking something, asking for a data, asking for some result, and then server is going to send that result to the client. So don't worry, I'm talking more on to that. Give me a minute. It is much more secure. Hey, why it is much more secure? Because इसका जो सिक्योरिटी है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, इसका जो सिक्योरिटी है, दिस सिक्योरिटी इज नॉट लिमिटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. यस, ओएस लेवल का तो सिक्योरिटी है ही, प्लस आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस का खुद का ऑथेंटिकेशन है. ऑथेंटिकेशन वर्ड आपको हेवी लगेगा, बट लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड. आपके डेटाबेस लेवल पे उसका खुद का यूजर नेम पासवर्ड है. ओह, दैट इज ग्रेट. Not only having only database level username password is not sufficient. हाँ, रूट इज लाइक वन ऑफ द यूजर, वो तो एडमिन यूजर है, लेकिन हम लोग कभी एडमिन यूजर से काम नहीं करते. हम लोग हमेशा नॉर्मल यूजर से काम करते हैं. हम लोग हमेशा नॉर्मल यूजर से काम करते हैं. सो ओएस लाइक अ डेटाबेस ऑथेंटिकेशन. वेट, इसका यहाँ पर खत्म नहीं होता है. ऑन द टॉप ऑफ इट, ऑन द टॉप ऑफ इट, आई एम सेइंग दैट अपार्ट फ्रॉम डेटाबेस ऑथेंटिकेशन देयर इज कि आपका यहाँ पर हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी. यहाँ पर सिक्योरिटी जो होता है, ये ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी होता है. इसको हम लोग सिक्योरिटी नहीं कहते, हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस या ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस कहते हैं. सो यू पीपल कैन गिव द प्रिविलेजेस एट द डेटाबेस लेवल, you can give the privileges at the table level, you can give the security at the particular even record level or a kind of operations level. आपको कौन से operations allowed है, आपको कौन से operations allowed नहीं है, all that kind of information ये आप लोग कर सकते हो. and this is like a built-in feature of RDBMS. so this is much more secure. ये सब कुछ आपको आज समझ में नहीं आएगा. जिस दिन हम लोग ग्रांट और रिवोक पढ़ेंगे, you will want to come back to this full slide and then you understand अच्छा ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है. अभी के लिए सिर्फ सुन लो, यस ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस होते हैं. आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन से यूजर को इंसर्ट अलाउड है, कौन से यूजर को अपडेट अलाउड है, कौन से यूजर को डिलीट अलाउड है, कौन के यूजर को कितने रिकॉर्ड दिखाने हैं, कितने रिकॉर्ड नहीं दिखाने. आप लोग इस लेवल तक का डिवीजन कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस यूजर के ऊपर डाल सकते हो. दैट इज समथिंग फैंटास्टिक वर्क. ऐसे दैट इट इज मच मोर सिक्योर एज कंपेयर टू योर नॉर्मल फाइल्स. Next, further, we are saying there is a multiple users.
What is multiple users? Now here you find that it is typically following server client architecture. Server client architecture simply means that you are putting all your data onto the centralized server. You are putting all your data into the centralized server, and you can have all your data to the centralized server, and then you can have, let's say, multiple users accessing that data from a different machines over the network और ओवर द इंटरनेट आप लोग एक्सेस कर सकते हो. सो यहाँ पर ये आपके पास क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, एंड दिस इज वेयर अ सर्वर इज. सो टिपिकल सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर. सो क्लाइंट को कुछ भी डेटा चाहिए, अंडरस्टैंड दैट, क्लाइंट को कुछ भी डेटा चाहिए, क्लाइंट सेंड अ क्वेरी टू द सर्वर कि मुझको ये डेटा चाहिए, दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेरी, एंड देन सर्वर is going to give the response back. A server is going to give the response back. So this is going to give you result back. इसका काम क्या है? इसका काम है क्वेरी भेजना, इसका काम है क्वेरी भेजना, इसका काम है रिजल्ट भेजना, एंड दिस इज हाउ द होल टाइम कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये जो पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग कहां पर हो रहा है? पूरा प्रोसेसिंग सर्वर की तरफ हो रहा है. आई रिपीट वंस अगेन, ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग सर्वर की तरफ हो रहा है, न कि क्लाइंट की तरफ. सो पूरा का पूरा सर्वर, पूरा का पूरा सर्वर डेटा मैनेज कर रहा है, पूरा का पूरा सर्वर आपका डेटा स्टोर कर रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है. Obviously, your server configuration should be good. You consider a machine with, let's say, 16 GB RAM or something like that. अगर आप लोग प्रोडक्शन सर्वर में हो, 32 GB RAM और इवन हायर रैम, तो आपको अच्छा रैम चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए. बट व्हेन इट कम डाउन टू द क्लाइंट, क्लाइंट में आपको कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लाइंट के पास 1 GB रैम होगा या ऐसा उससे भी कम होगा तो भी चल जाता है. क्लाइंट को कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आप लोग कभी नहीं दे रहे हो. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज समथिंग गुड थिंग. दिस इज सर्वर्स एंड क्लाइंट काइंड ऑफ स्टफ वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर जो हम लोग डेटा भेज रहे हैं, तो सर हम लोग पूरा का पूरा डेटा सर्वर से निकाल के क्लाइंट को भेज रहे हैं क्या? नहीं नहीं, उसकी डेटा की कॉपी भेज रहे हैं क्लाइंट को. वो भी उतना ही डेटा भेज रहे हैं जितना उसने मांगा है, जितना उसने मांगा है. Amit, just now I answered this question. What is query? Query is nothing but you are asking for some data. So you are asking that which, let's say, कौन से बुक, इस बुक के कितने कॉपीज तुम्हारे पास है. So आपने ये क्वेश्चन पूछा, that is query. और वहां से रिस्पॉन्स आया, इसके मेरे पास 4 कॉपीज है, ये रहा उसका रिजल्ट. जस्ट नाउ नम्रता आस्क्ड द क्वेश्चन, आई आंसर्ड द सेम कि व्हाट इज क्वेरी. एंड डोंट वरी, हम लोग आगे जाके क्वेरीज लिखने वाले. पूरे पूरे मॉड्यूल में हमें सिर्फ क्वेरीज ही लिखने हैं. So nothing to worry about it. So sooner or later you will understand it. सौरभ का कुछ क्वेश्चन है, इन फॉर्म ऑफ होल डेटा और रिक्वायर्ड डेटा ओनली. जितना डेटा मांगा गया है उतना ही भेजा जाएगा. सी यू माइट हैव लिटरली गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स ऑफ डेटा stored onto the server side. Please note that RDBMS can very well manage the huge amount of data up to the terabytes. Now every time you ask some query and you are started giving a terabytes of data, don't you think it is nonsense that sir ये पूरा का पूरा डेटा भेज रहे हो? Now see, it is very simple. Let's say that I don't claim कि मुझको बहुत आता है, मेरे को आता है थोड़ा बहुत, but now you ask me some question and I started answering everything that I know. Is it what you are expecting? Oh, this is nonsense. What is expected that you ask me some question और आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा. This is something I'm saying. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. और बाय द वे, कौन आंसर दे रहा है? सर्वर आंसर दे रहा है. तो जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है? सर्वर की तरफ हो रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. क्लाइंट में आपको कोई हेवी प्रोसेसिंग नहीं करना है. सो होल प्रोसेसिंग इज डन एट द सर्वर साइड. Not only that, we are saying that we are having clustering support, distributed system support. So what do you mean clustering support or distributed system support? Here I go. Just to tell you that, अब ये मेरा एक मशीन है. Take a look at this. अभी ये मेरा एक मशीन है on which this whole data is kept. But what I'm saying is that what if this machine goes down? What if this machine goes down? I guess there will be a big problem. So जो प्रोडक्शन लेवल पे जो काम करते हैं लोग, वो ऐसे नहीं करते एक मशीन रखते हैं. वो लोग क्या करते हैं? दे कीप अ मल्टीपल मशीन्स. Have a look at this. They keep the multiple machines ready as a backup or as a copy, you can say. वो multiple machines आपके maintain करके रखते हैं, so that even though one machine goes down, listen carefully, even though one machine goes down, the other machine should immediately work. सर ये सारे machines होते कहाँ पर है? I said that they are connected in a network. आप इसको लैन मैन वैन, आपने कभी ऐसा कुछ नेटवर्किंग में पढ़ा होगा. सो ये लैन मैन वैन, जिस काइंड ऑफ आप लोग नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हो, और ये जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है
इसको टेक्निकल भाषा में वी कॉल इट एज अ क्लस्टर. व्हाट इज दिस? आई एम कॉलिंग इट एज अ क्लस्टर. सो व्हाट इज क्लस्टर? अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, व्हाट इज क्लस्टर? वर्चुअल आईपी, स्टैटिक आईपी, वो आप लोग डिसाइड करो. किसी भी टाइप का क्लस्टर बनाओ. इट इज अप टू यू, अप टू यू. यू डू नॉट वांट कि अगर लेट से दैट एक सर्वर डाउन हो गया, आप लोग सोचो, आप लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हो, आपका एक सर्वर बंद हो गया एंड नाउ द एंटायर बैंक इज स्टॉप्ड. नो, दिस इज नॉट रियली एक्सपेक्टेड. व्हाट यू एक्सपेक्ट दैट अगर एक सर्वर बंद पड़ गया, इमीडिएटली सेकंड सर्वर कम शुड कम इनटू पिक्चर. यस, दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इसको क्लस्टर का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. द मल्टीपल मशीन्स working in a network for a dedicated task is called as a cluster. What is a cluster? Technically, technical definition, the number of computers connected in a network for some dedicated job, correct, is nothing but you call it a cluster. अभी यहाँ पर मैं जो क्लस्टर कह रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस क्लस्टर. अभी जो मैं क्लस्टर कर रहा हूँ डेटाबेस क्लस्टर, आगे जाके वेब एप्लीकेशन क्लस्टर भी होगा, आगे के और भी कुछ क्लस्टर होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाँ, बैंक वाले जब कहते हैं कि सर्वर डाउन होगा तो क्या होता है? सो देयर आर क्वाइट गुड चांसेस कि उनका पूरा का पूरा क्लस्टर का जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो गया है. हो सकता है कि पूरा का पूरा आपका क्लस्टर का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है. नाउ दैट इज समथिंग यू कॉल इट ए सर्वर डाउन. बट आइडियली अच्छे बैंक्स में ये प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छे बैंक्स में मतलब सम बैंक्स विच आर लाइक इंटरनेशनल लेवल बैंक्स, यू फाइंड दैट, मतलब ब्रदर इतने सालों में मैंने सुना नहीं है कि लाइक सिटी बैंक इट इज लाइक गोइंग डाउन. ऐसा नहीं है. yes there is a yes exactly, it means that there is a problem in landman or van or like one of the machine. हाँ, इसलिए मैं इंटरनेशनल बैंक्स की बात कर रहा हूँ. एंड देन लाइक से आई हैव गॉट माय अकाउंट इन लाइक अ सिटी बैंक एंड ओवर द इयर्स आई नेवर सीन दैट कि सिटी बैंक वाज डाउन फॉर सम गुड रीजन. एनीवे, यूनिवर्सिटी रिजल्ट टाइम सर्वर इज डाउन. नहीं, वो तो ठीक है, ये लोग जिंदगी में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो ऐसा होगा ही. अरे हाँ ठीक है, मेरे को पता है इंडिया के गवर्नमेंट बैंक्स है, अपना ही कंट्री यार, संभाल लो. करेक्ट होगा. आई एम वेरी श्योर कि जब आप लोग एडवांस कंप्यूटिंग पास करोगे, आगे जाओगे, यू विल बी रियली डेवलपिंग सम सॉफ्टवेयर्स which are ensure that even though there are problems into the network and all that, you people will be having backups ready. So you, yes exactly, you get it into that way, so you still have a lot of scope to do. अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता फिर आपको कौन पूछता? So you should take it positively, you know. So there are problem and that's why we are here, right? So let us appreciate it and let us start working on to that. अमित, जाने दो, हम लोग बहुत टेंशन नहीं लेंगे. क्या कहते हैं, ये बैंक क्यों नहीं यूज करते वगैरह वगैरह, हर एक चीज के अपने बजट्स वगैरह होते हैं. ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग मैनेजर लेवल के ऊपर नहीं जाते हो. सो व्हेन यू रीच टू द मैनेजर डायरेक्टर पोजीशन, यू नो, एट दैट टाइम यू कैन डिस्कस कि ये क्यों नहीं होता है और वो क्यों नहीं होता है. अभी के लिए जो है वो है. लेट अस एक्सेप्ट एंड लेट अस कंटिन्यू गोइंग अहेड. तो सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आता है क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज माय, यहाँ पर लेट्स से बैंकिंग सर्वर है. अगर बैंकिंग सर्वर है और बैंकिंग सर्वर के ऊपर लेट्स से मेरे पापा का अकाउंट कहीं पर, तो अकाउंट का डिटेल यहाँ पर है, पापा के अकाउंट का डिटेल यहाँ पर है. सो पापा यू नो बैंक में गए और वहां से वो डिपॉजिट विड्रॉ कुछ तो कर रहे हैं. मेरे पास पापा का यू नो क्रेडिट डेबिट कार्ड है और वो डेबिट कार्ड में एटीएम में लेके गया और एटीएम से मैं ये कर रहा हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, दोनों लोग या तो वो बैंक का क्लार्क होगा वो, या फिर मैं होऊंगा जो एटीएम के थ्रू कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू डील विद द सेम अकाउंट. यस, आई एम ट्राइंग टू डील विद द सेम अकाउंट. तो सर डेटा करप्ट नहीं होगा क्या? होने के चांसेस है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आरडीबीएमएस हैज गॉट इट्स ओन मैकेनिज्म और वो पूरा का पूरा डेटाबेस लॉक नहीं करता. जैसे एक्सेल में पूरा का पूरा फाइल लॉक होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा डेटाबेस लॉक नहीं होता. वो कोई तो पर्टिकुलर टेबल लॉक होता है या पर्टिकुलर रिकॉर्ड लॉक होता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे इंप्लीमेंट किया है, आपके आरडीबीएमएस ने कैसे मैनेज किया है, वो लॉकिंग हो जाता है. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिस आरडीबीएमएस आर डिजाइन टू बी very easily integrated with the applications like Java, Python, .NET. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आता है, आप लोग देखोगे आगे जाके आप लोग जो कुछ भी एप्लीकेशंस डेवलप करोगे, आगे जाके आप लोग जो भी एप्लीकेशंस डेवलप करोगे, all those applications will be like that only.
What is that? They are developed they are developed in such a way they are developed in such a way that some database has to be connected. करेक्ट सर? ऐसे कोई अच्छे खासे आरडीबीएमएस है. ये आरडीबीएमएस वैसे काफी नया बात नहीं है. 50 years back, you know, a person like EF Cod, just for your information, he was a mathematician. He was a mathematician and he put forward a theory कि हम लोग databases ऐसे बना सकते हैं. He has given some mathematical rules. He has given a mathematical rules. How many rules are given? I said that 1 plus 12 rules were given, and all these rules are based on something called as a set theory. Set theory, मैथमेटिक्स की सेट थियरी. सो इट इज बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल सेट थियरी, और ये डेवलप किए गए थे रूल्स. एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस रूल्स, यू नो, बहुत सारे कंपनियों ने खुद के डेटाबेस बनाने की कोशिश की. ऑब्वियसली दिस कॉड इज वर्किंग विद आईबीएम, और फिर आईबीएम के लोगों ने जो उनका पहला मेनफ्रेम डेटाबेस बनाया, it was DB2. But you know, before DB2 was into the picture, there was, you know, Oracle. Oracle is like a company which made the first commercial RDBMS. And obviously Microsoft कहाँ पर पीछे रहने वाली थी? You must have seen that Microsoft SQL Server is like another. These two are most popular. These two are most popular, I can say, enterprise databases. These are द एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए ये डेटाबेसेस बहुत कॉमनली यूज होते हैं. सो आई नो दैट एलआईसी वालों का डेटाबेस ओरेकल के ऊपर है, एंड देयर आर मेनी बैंक्स, आई हैव सीन दैट देयर उनका डेटाबेस एमएस सिक्वल सर्वर के ऊपर है. सो दीज आर द एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है. DB2 is also very good database, but it is like more popular into the mainframe category. मेनफ्रेम में टेलॉन या ऐसे और भी दो चार डेटाबेसेस है, बट DB2, यस, इट इज मोस्ट पॉपुलर ऑन टू दिस. आईबीएम कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस मेनफ्रेम में. सो ऑब्वियसली उन्होंने जो जो चीजें बनाई, उन्होंने मेनफ्रेम रिलेटेड ज्यादा बनाई. यस, कोबोल यूज DB2. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो कोबोल मेजॉरिटी DB2 के साथ वो आईबीएम के ऊपर ये सबसे ज्यादा यूज होता है. बाय द वे, these databases, Oracle or Microsoft SQL Server, these are heavily paid databases. I'm not saying paid databases, these are heavily paid databases. And then people were looking for कि यार कुछ free databases या ऐसा कोई option available है. And then MySQL is also enterprise level database. However, this is kind of an open source database. Not fully, but yes, it is partially open source database. इसके अलावा और भी बहुत सारे databases है. One of a few more databases, if you just want to add a names of them, then like a Sybase नहीं है, Sybase is like one of the database. PostgreSQL is another popular database. आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आजकल neck to neck with MySQL, this database is working in industry. Lot of people are using that. So Sybase, PostgreSQL. Apart from that, Informix is another popular database is there. Yes, Informix is there, and there are so many. अब Oracle क्या दे, मैं जानबूझ के मैं क्लाउड के ऊपर नहीं जा रहा हूँ. क्लाउड डेटाबेस सर्विसेज, RDS इज क्लाउड बेस्ड डेटाबेस सर्विस. RDS ये डेटाबेस नहीं है, RDS ये सर्विस का नाम है, तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट द डेटाबेसेस कौन कौन से है. यस, MariaDB अगले स्लाइड के ऊपर आने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ. सो ऐसे hundreds of databases they do exist. But इसके अलावा there are small databases are also there. The small databases are also there, and the small databases like somewhere say MS Access, SQLite, these are file based RDBMS. ये फाइल बेस्ड RDBMS के सारे कंसेप्ट लेकिन फाइल के अंदर, एंड दिस इज फॉर रियली स्मॉल डेटा. This is for really small data into few MBs or something like that. SQLite, Microsoft Access और Derby database, ये सारे databases इसके लिए काम आते हैं. तो सर ये सारे databases मुझको अलग अलग से पढ़ने पड़ेंगे क्या? नहीं, गुड न्यूज इज दैट ये सारे databases के सिंटैक्स 99% सेम है. मैंने 99% कहा. ऑल दिस डेटाबेसेस यू वांट टू डील विद, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज.
सो आपको ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आना चाहिए. यू शुड सेंड द क्वेरी टू द सर्वर एंड सर्वर विल गिव यू द रिजल्ट. दैट्स इट. आई रिपीट वंस अगेन, ये सारे आरडीबीएमएस, जितने सारे आरडीबीएमएस हैं, जितने सारे आरडीबीएमएस है, इन सबको एक लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस इज आई एम सेइंग 99% सेम, नॉट 100% सेम, क्योंकि डेटा टाइप्स थोड़े से अलग हो जाते हैं एंड देन फ्यू फंक्शंस इधर उधर चेंज हो जाते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग दैट 100% सेम, बट वन थिंग इज श्योर, अगर आपको एक आरडीबीएमएस आता है, यू कैन 100% वर्क ऑन अनदर आरडीबीएमएस. थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, नो डाउट ऑन दैट. There are some question. I guess Saurabh, I answered your question. Let me find out if any other question is there. Aman is asking the question, what is mainframe? Again, computer fundamentals आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मेरा assumption है. Please go back. You learn generation of the computers. So first generation computer, second generation computer, third generation computer. ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी कंप्यूटर के हिस्ट्री में सुना होगा कि जब पहली बार कंप्यूटर बनाया गया था, it was very big kind of computer and very big kind of computer, whole room size, जहाँ पर सीपीयू वगैरह सब कुछ रखा जाता था, कंट्रोल पैनल रखा जाता था, उसके ऊपर से आप उसको एडजस्ट करते थे. दैट काइंड ऑफ कंप्यूटर वी कॉल इट एज अ मेनफ्रेम कंप्यूटर. Obviously early it was too big. Now over the period उसका साइज slowly कम हो गया and still आज भी mainframe computer आते हैं, but it is still kind of a cupboard size mainframe computer you can still see even today. आप आजकल जो आप लोग देखते हो it is like a desktop computers. Aman, I just given you the hint. More details, please go ahead and find out. Open source simply means that ऐसा database जिसका source code open है, कोई भी उसका source code निकाल के पढ़ सकता है, वो GitHub के ऊपर या GitLab के ऊपर अपलोड किया जा सकता है. That is absolutely fine. ऐसे उसको आप लोग open source कहते हो. और free in the sense इसका कोई costing आपको किसी को नहीं देना पड़ेगा. So that kind of is called as a open source software. And free का मतलब है it is a free software, you are not supposed to pay for someone, right? Yes, absolutely there. And next, sir, our Sunbeam portal uses which database software and servers? Sunbeam के अंदर हम लोग मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. जो हमारा स्टूडेंट पोर्टल है, वी आर यूजिंग MongoDB. Our student portal is developed in like MongoDB. As far as backend server is concerned, हमारा जो वेबसाइट है उसके लिए we are using MySQL also and Microsoft SQL Server also. हम लोगों ने दोनों यूज किया हुआ है. I hope you got that. So अगेन रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में आपको सब कुछ एक साथ लगता है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये बनाओ तो काम हो जाता है. Yes, we are using multiple ones together. Hey, that was like a overall idea. What all different RDBMS are there. और मैंने कहा ना हर एक का अपना अपना प्लस माइनस है. इसमें से as I was saying that SQL. So what is SQL? SQL, have a look at this. Just now I was showing you that it's like a server client architecture. So you have got some server, you have got some client. So these are going to communicate with each other. So client is going to send a SQL query and server is going to send some sort of a result. That's it. This is how the story works, right? What is source? Source is source code. Source is source code. ओपन सोर्स का मतलब होता है उसका सोर्स कोड इज ओपन. आप लोग गिटहब के ऊपर जाके चेक कर सकते हो. अगर आपको ढूंढना है MySQL का सोर्स कोड ढूंढो, गिटहब या गिटलैब के ऊपर मिल जाएगा. लिनक्स का सोर्स कोड github.com के ऊपर है. सो github.com लिनक्स गूगल सर्च करो, इट विल टेक यू onto the लिनक्स सोर्स कोड. ऑब्वियसली सोर्स कोड इज इनटू द इटसेल्फ इज इनटू द MBs. पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाता है. यू डोंट वरी अबाउट इट. आई होप इट इज क्लियर. Yeah, I'm just going ahead and I'm saying that client send SQL queries to the RDBMS server and operations are performed accordingly. Yes, absolutely correct. You go ahead. ये जो SQL queries है, SQL का full form मैंने आपको बताया शायद. SQL stands for structured query language. It stands for structured query language. और structured query language, you understand that ये इसका नया नाम दिया गया है after standardization. Initially it was something called as a RQB at IBM. जब IBM में ये पहली बार बन रहा था, रिसर्च चल रहा था, तो IBM में इसको लोग कहते थे relational query by example. It was IBM's original name, but later on it has been standardized and name is given as structured query language.
सिक्स का स्टैंडर्डाइजेशन किसने किया? सेम इंस्टीट्यूट जिसने सी का किया था। क्या आपको पता होगा सी का स्टैंडर्डाइजेशन कौन से ईयर में हुआ था? एनीवन नोज? सी, एनसीसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, सी का स्टैंडर्डाइजेशन कौन से ईयर में हुआ था? ओए 1979 नहीं, नो वे, 1972 में उसका बर्थ हुआ था। मैं बर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा हूं। यस, फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन वाज इनटू द 1989, फर्स्ट वाज इनटू द 1989, सेकंड वाज इनटू द 1999, सेकंड वाज इनटू द 1999। सो पहला स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था 1989, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको C89 स्टैंडर्ड कहते हैं हम लोग उसको। प्लीज नोट, बिफोर दैट स्टैंडर्डाइजेशन, यस उसके बाद में और भी हुआ, 11 में हुआ, 14 में हुआ, ये चल रहा है, नो डाउट ऑन दैट। मैं बता रहा हूं पहला स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था 1989। यू विल बी शॉक टू नो दैट बिफोर सी वाज स्टैंडर्डाइज, बिफोर सी वाज स्टैंडर्डाइज 1987 में आपका सीक्वल स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था, द फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ऑब्वियसली ऑल द स्टैंडर्ड्स आर रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एवरी ईयर। इसका एवरी ईयर नहीं, आफ्टर एवरी 2-3 years इसका रिवीजन होता है। द लास्ट स्टैंडर्डाइजेशन वाज डन इन 2016। सर हर स्टैंडर्डाइजेशन में कौन से फीचर ऐड किए गए थे? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, प्लीज गो बैक, रेफर विकिपीडिया, ये आपको बताया जाएगा कि कौन से इसमें कौन से फीचर ऐड किए गए थे। एनीवे, अब पीपल आर आस्किंग मी, सर इज SQL इज डिफरेंट देन सी प्रोग्रामिंग? आई से दैट इट इज फार डिफरेंट, far different. SQL is something different and C is entirely different. These are two entirely different languages. Obviously programming का sense आपको सब जगह पे चाहिए, प्रोग्रामिंग का सेंस चाहिए, बट सिंटैक्टिकली वहां पर कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लिखते, करेक्ट? सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स आर डिफरेंट। Very first difference is that SQL is case insensitive. A SQL is case insensitive, but I will like to add one point. Even though it is case insensitive, except table and database names on Linux platform, Linux, or you can say Unix platform. Unix platform, obviously I am talking of MySQL. सो MySQL अगर आप में से कोई लिनक्स के ऊपर यूज कर रहा है, अगर आप में से कोई MySQL लिनक्स के ऊपर यूज कर रहा है या मैक के ऊपर यूज कर रहा है, मैक इज फाइनली बेसिकली द यूनिक्स, ये याद रखना। अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, देन आई एम सेइंग दैट SQL इज केस इनसेंसिटिव एक्सेप्ट द टेबल एंड डेटाबेस नेम, वो छोड़ के बाकी सब कुछ ऐसा, इट इज अ केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव। लिटरल्स एज वेल, इवन लिटरल्स आर इनसेंसिटिव एज फार एज MySQL इज कंसर्न। जब टॉपिक आएगा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आई एम जस्ट गोइंग अहेड। SQL कहां पर गया? देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज, सो देयर आर टोटल 5 पार्ट्स। जब हम लोग सी पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, कुछ तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ तो फंक्शंस होते हैं, कुछ तो एरेज होते हैं, कुछ तो स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे हम लोग सी में कुछ डिवीजन करते हैं। वैसे SQL के अंदर ये डिवीजन है। क्या डिवीजन है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, how to modify the table, how to delete the table, how to rename the table. Yes, that comes under DDL. DML, how to insert the record into the table, how to change the records, how to delete the records, that come under DML. DQL, oh, how do you query the record? How do you select the records? Yes, it is data query language. Yes, we can do that as well. Apart from that, data control language, where we can create a new user, where you can grant the permission, where we can revoke the permission. हम लोग अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया था, सो सिक्योरिटी कैसे देनी है, कैसे सिक्योरिटी कैसे निकालनी है, यू नो दिस काइंड ऑफ फीचर्स, इट इज लाइक अ DCL. Apart from that, we have a TCL. TCL stands for transaction query language. So there is a concept how we can commit the transaction, how we can roll back the transaction, and etc etc. So there are 5 major categories. सर आप ये नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा, लेकिन सब कुछ एक दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। देर आर 2 weeks, और गुड थिंग इज दैट हम लोग इसमें से हर एक चीज का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो अभी एक लाइन में सब कुछ समझने की कोशिश मत करना, जस्ट ये 5 नाम होते हैं, इतना याद रखना। हम लोग हर एक का प्रैक्टिकल करके देखेंगे, थिंग्स शुड बी क्लियर बाय देन, राइट? तो सर इसके अंदर हम लोग नाम वगैरह नहीं लिखते। अभी मैंने ऊपर बताया ना, टेबल के नाम, डेटाबेस के नाम, कॉलम के नाम, ये आपको ही लिखना पड़ेगा। तो सर वो टेबल के नाम, कॉलम के नाम, डेटाबेस के नाम अगर आपको ही लिखना पड़ेगा, तो वो नाम कैसे लिखेंगे? ये जैसे हम लोग सी में वेरिएबल के नाम लिखते हैं, वैसे ही लिखेंगे। वेरिएबल के नाम लिखते हैं, फंक्शन के नाम लिखते हैं। SQL के अंदर हम लोग टेबल और कॉलम के नाम लिखते हैं। हैव अ लुक एट दिस, टेबल एंड कॉलम नेम्स आर कंटेनिंग अल्फाबेट, डिजिट्स
एंड स्पेशल सिंबल्स। सो कौन कौन से स्पेशल सिंबल अलाउड है? अंडरस्कोर अलाउड है, डॉलर अलाउड है, हैश अलाउड है। दीज आर द स्पेशल सिंबल्स अलाउड। ampersand is not allowed, your star is not allowed, percent is not allowed. Now those kind of special symbols are unfortunately not allowed. ये कुछ स्पेशल सिंबल्स अलाउड है, बाकी तो जैसे सी का वेरिएबल का नाम लिखते हो वैसे ही आप लोग यहाँ पर टेबल का नाम लिख सकते हो, वैसे ही आप लोग कॉलम का नाम लिख सकते हो, वैसे ही आप लोग डेटाबेस का नाम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लोग कोई स्पेशल सिंबल यूज कर रहे हो देन दैट मस्ट बी इनटू द बैककोट्स। बैककोट्स कहां पर होता है? आपका कीबोर्ड चेक करो, आपके कीबोर्ड के अंदर एस्केप की के नीचे जो की है वो बैककोट की है। आई होप आपके पास आपका कीबोर्ड है और उस कीबोर्ड के नीचे कीबोर्ड में एस्केप का जो की होता है, एस्केप के की के नीचे, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, उसके नीचे जो की है दैट इज नथिंग बट बैककोट की। इट इज नॉट अ सिंगल कोट, इट इज नॉट डबल कोट, इसको हम लोग बैककोट कहते हैं, रिवर्स कोट, करेक्ट। जस्ट टू गिव एग्जांपल, ये हमारा टेबल का नाम, यहाँ पर मैंने हैश लगाया है तो इसको बैककोट में डाला गया, यहाँ पर डॉलर लगाया है इसको बैककोट में डाला गया। ये नॉर्मल नाम है, इसके लिए बैककोट लगाना कोई जरूरी नहीं है। सर हम लोग कितने कितने कोट्स लगा कहते हैं, कितना बड़ा नाम लिख सकते हैं? वी कैन प्रोवाइड द नेम अप टू 30 कैरेक्टर्स, वी कैन राइट द नेम अप टू द 30 कैरेक्टर्स। इट इज सपोर्टेड इन ऑल आरडीबीएमएस, कुछ आरडीबीएमएस में इससे भी ज्यादा सपोर्टेड है, लेकिन कम से कम 30 कैरेक्टर्स दे आर सपोर्टेड इन एवरी आरडीबीएमएस। व्हाट वाज दिस? दिस वाज ओवरव्यू ऑफ सीक्वल, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग लिखने वाले हैं। लेकिन सर लिखेंगे कहां पर? आरडीबीएमएस में। सर आरडीबीएमएस कौन सा? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, माई सिक्वल आरडीबीएमएस। एंड देन सर माई सिक्वल आरडीबीएमएस, अ ब्रीफ हिस्ट्री, हु डेवलप्ड इट? इट वाज डेवलप्ड इन अ स्वीडिश कंपनी। माई सिक्वल की अपनी एक कंपनी थी, स्वीडिश कंपनी। द ओरिजिनल डेवलपर इज लाइक माइकल, in year 1995 it is named after his daughter name, right? And then this obviously originally planned, it was planned as a open source only। तो जिन्होंने बनाया उन्होंने ये सपना देखा था कि हम लोग ओपन सोर्स डेटाबेस करके ही बनाएंगे। बट यू नो ओवर द पीरियड ईयर 2008 में सन माइक्रोसिस्टम परचेज दैट होल कंपनी, माइसिक्वल को परचेस कर लिया, ओवरटेक कर लिया, correct? And then I'm saying that 2008 it come under the wings of Sun Microsystem। but रुको जरा, the 2010 Oracle acquired Sun Microsystem। तो अभी आप लोग जो डाउनलोड कर रहे थे MySQL का dev.mysql.com, that website is basically of Oracle। एंड आप लोगों ने शायद नोट किया होगा जब आपने MySQL इंस्टॉल किया था वहां पर उसके ऊपर Oracle का लोगो आता है। तो Oracle कंपनी के नाम पे अभी उनके पास दो डेटाबेसेस है, Oracle का खुद का डेटाबेस plus MySQL database is nothing but yes definitely of a MySQL OB, Oracle का ही database है अभी nowadays it is with। what is the speciality? Speciality is that MySQL is free and open source database under GPL license। GPL stands for General Public License, so it is freely available for using। लेकिन रुको some enterprise level modules are closed source and they are available अंडर कमर्शियल वर्जन्स ऑफ MySQL। आप लोगों ने MySQL खुद से डाउनलोड किया, ये मेरा एजम्पशन है। अगर आप लोगों ने MySQL खुद से डाउनलोड किया है तो MySQL का जो डाउनलोड्स है, MySQL की जो डाउनलोड्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाउनलोड्स आर देयर। वन इज लेट्स से एंटरप्राइज एडिशन, वन इज द एंटरप्राइज एडिशन एंड सेकेंड एडिशन इज अ कम्युनिटी एडिशन। जो कम्युनिटी एडिशन है, दैट कम्युनिटी एडिशन जो है इट इज फ्री एंड एंटरप्राइज एडिशन जो है इट इज पेड विथ सम एक्स्ट्रा फीचर्स एंड दोज फीचर्स आर नॉट ओपन सोर्स। those features are not open source, but trust me, majority of companies they are still using a community edition only। this is most popular। let me tell you, जितने सारे फ्री के डेटाबेसेस है, जितने सारे फ्री के आरडीबीएमएस है, उसमें से जितने सारे फ्री के आरडीबीएमएस है उसमें से मोर देन 50% शेयर इज ऑफ MySQL alone। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट? तो सर अगर मुझको लेट से कंप्लीटली फ्री चाहिए, कंप्लीटली फ्री MySQL के पास नहीं है, लेकिन ये जो माइकल है उसने एक काम अच्छा किया था, अच्छा कहो बुरा कहो जो भी कहना है वो कहो, उस माइकल ने अपनी कंपनी बेचने से पहले, क्या MySQL को बेचने से पहले, MySQL को बेचने से पहले उसने उसका एक क्लोन क्रिएट किया था और उसका नाम था मारिया डीबी। मारिया डीबी
It's completely open source clone of MySQL. So this is not belonging to any particular company. ये किसी कंपनी का प्रोप्राइटरी नहीं है, किसी कंपनी का कॉपीराइट नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज कंप्लीटली ओपन सोर्स. एज आई सेड दैट MySQL भी ओपन सोर्स है, लेकिन मैंने आपको बताया सम इंटरप्राइज मॉड्यूल्स दे आर क्लोज सोर्स. लेकिन MariaDB is completely open source, 100% open source. It is available. But trust me, MariaDB के अंदर वो सारे enterprise modules नहीं है जो MySQL के अंदर है. तो when it comes down to the enterprise purposes, as you are making a copy, as it is making a, if you are making a money, you can always afford going with like a paid database like MySQL as well. If it is clone, then it is fine with Oracle. हाँ, ओरेकल को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओरेकल ने परचेस करने से पहले उसका कॉपी आया था. प्लीज नोट दैट ये जो MariaDB का जो पहला क्लोन बनाया गया था, इट वाज समवेयर इन ईयर 2007. सो बिफोर इट इज टेकन बाय सन माइक्रोसिस्टम, बिफोर इट इज टेकन बाय द ओरेकल, ये उसके बहुत पहले वाला कॉपी है. तो ओरेकल क्या कर सकता है? हाँ, उसके बाद में कॉपी बनाता तो शायद ओरेकल उनको कोर्ट केस करता, वो बात अलग है, नो प्रॉब्लम. MySQL has got support for database storage, processing engines and all that. ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. अगर बाद में कभी आपकी जान बची तो let me know. We can talk about MySQL architecture separately. There you can understand it. Some highlights of MySQL versions. This information is taken from the Wikipedia कि कौन से वर्जन में कौन-कौन से नए फीचर ऐड किए गए. Obviously अब हम लोग जो फीचर हम लोग जो यूज करने वाले हैं, हम लोग 8.0 यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर ऑल लेटेस्ट फीचर ऑफ MySQL आर अवेलेबल. और मैं फिर से बता दूं, MySQL ऐसा मत समझना. आई सीन लॉट ऑफ पीपल से दैट सर ओरेकल बहुत अच्छा डेटाबेस है, MS SQL बहुत अच्छा डेटाबेस है. नो डाउट दे आर ग्रेट डेटाबेसेस, दे आर ग्रेट डेटाबेसेस, बट इट रियली डजंट मीन कि कोई डेटाबेस अच्छा होने से कोई दूसरा डेटाबेस खराब हो जाता है. I guess you understand the point that I want to make. I'm not saying that Oracle is bad database. I'm not saying that Microsoft SQL is bad database, but trust me, MySQL is one of the best open source database and is one of the best open source database. मैं नहीं कह रहा हूँ, it is a database of year 2019. लास्ट ईयर का रैंकिंग में, डेटाबेस इंजन रैंकिंग, डेटाबेस का क्वेरी प्रोसेसिंग इंजन के रैंकिंग में, दिस वाज अ टॉप मोस्ट नंबर 1 डेटाबेस. So it is worth learning MySQL, not just because it is free, but it is also because of the top rated database and accepted by the world. Accepted by the world. तो सर, are you going to talk about installation? No, not at all. जिसको इंस्टॉल करना है, मैंने यहाँ पर Ubuntu और Linux का इंस्टॉलेशन बताया हुआ है. विंडोज का पूरा इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मैंने आपको करके दिखाए थे, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट कि आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर भी लिया. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो इंस्टॉल कर भी लिया है. आई एम होपिंग सो. द क्वेश्चन इज सर, ये इंस्टॉलेशन हुआ कहां पर है? लेट मी शो यू. C colon program files, somewhere MySQL server. This is a place where your major components are installed. आपका जो मेजॉरिटी ऑफ MySQL इंस्टॉल हुआ है, आपका मेजॉरिटी ऑफ MySQL is installed over here. Majority of MySQL it has been installed over here. और इसके अंदर बिन में अगर आप लोग जाओगे, दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पर है. one important component is MySQL D. You call it MySQL daemon. ये आपका MySQL का सर्वर है, और दूसरा है MySQL.exe. ये आपके MySQL का क्लाइंट है. ये आपके MySQL का क्लाइंट है जिसके थ्रू हम लोग क्वेरी फायर करने वाले हैं. The point that I want to make it over here is that it is MySQL server, which is named MySQL D for daemon. और daemon का मतलब ये होता है, it is running in a background with no GUI created for that. No GUI, no CLI, कोई GUI नहीं है. सर मैं इसको देख सकता हूँ क्या? Definitely, you can go to the task manager. And into the task manager you can go to the details. अगर आपके मशीन में MySQL इंस्टॉल्ड है, you can find out यहाँ पर MySQL D है. You can just scroll through these names. आपको कहीं ना कहीं पर तो MySQL D दिखना चाहिए. सर दो प्रोसेसेस रनिंग है. हाँ, दो इसलिए, एक बैकअप करके, अगर एक बंद हो गया तो दूसरा इमीडिएटली ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है. डोंट वरी अबाउट इट. आप लोग चेक कर लो आपके मशीन के ऊपर MySQL इंस्टॉल है क्या, आपका MySQL बैकग्राउंड में रनिंग है क्या. मेरे मशीन पे तो रनिंग है. MySQL D सर्वर इज रनिंग, क्लाइंट नहीं बात कर रहा हूं, सर्वर इज रनिंग. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. Okay, that is great. So you understood
ओ MySQL daemon इज रनिंग, आप लोग भी चेक कर सकते हो आपके मशीन के ऊपर, मेरे मशीन के ऊपर दिख रहा है, मेरा मत देखो, अपना MySQL देखो, करेक्ट? सो यू कैन फाइंड आउट देयर, सो इट इज देयर। सर ये किसमें इंस्टॉल, किसमें लिखा गया है? जैसे इट इज ओपन सोर्स, उसका सोर्स कोड अगर आप लोग चेक करोगे, इट इज प्योरली रिटन सी सी प्लस प्लस। Let me tell you, world's all great RDBMSs, they are written in C++. Do not underestimate the power of C++. A lot of people, they'll say that, so Java is great language, I know. Full stack is great, I know. .NET is great, I know. मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बट फिर से एक बार, आपके किसी लैंग्वेज को ग्रेट कहने से किसी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाता। सो यू फाइंड दैट जब भी कहीं भी यू आर लुकिंग फॉर द हाईएस्ट परफॉर्मेंस, people always come down to the CC++. There is no choice. तो सर RDBMS जावा में लिखा हुआ कोई RDBMS नहीं है ना? डर्बी नाम का एक डेटाबेस है, अपाचे डर्बी। डर्बी इज अ RDBMS, it is written in a Java, but it is a small scale database. It is not for gigabytes and terabytes of data. जो databases gigabytes और terabytes की बात करते हैं, all these databases are developed in C or C++ or combination. Take it granted. सर आपको किसने बताया? गो टू द विकिपीडिया एंड रीड इट फ्रॉम देयर, राइट? गो अहेड। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है SQL क्वेरीज प्रोसेस करना, रिजल्ट जनरेट करना एंड सेंड इट बैक। ओके, दैट इज ग्रेट। बाय डिफॉल्ट इट रन ऑन पोर्ट नंबर 3306। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क सॉकेट। अगेन मैं यहाँ पर कुछ चीजें मैं हमेशा एज्यूम करने वाला हूँ, बिकॉज इफ यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच इट विल बी टू बिग टू डील विथ। यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों ने सीकेट एग्जाम पास किया है और अपने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा है। कंप्यूटर फंडामेंटल में नेटवर्किंग नाम का एक छोटा सा पार्ट होता था। सो यू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईपी एड्रेस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पोर्ट नंबर। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, अभी के लिए एज्यूम करो कि आपको आता है एंड देन यू गो अहेड। जब कभी जावा का मॉड्यूल होगा या कोई और मॉड्यूल होगा, वहां पर आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज सॉकेट, यू कैन लर्न इट बेटर देयर, बट इट इज वेरी वेल एक्सपेक्टेड दैट सो व्हाट इज नेटवर्क और व्हाट इज सॉकेट, ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर नहीं डील करेंगे। RDBMS is MySQL. RDBMS is a concept. MySQL is a product. SQL is a programming language. This is the second thing. We have a platform which is MySQL. Platform nahi hai. MySQL is a product made by the company, sold by the Oracle nowadays. So we are dealing with the MySQL. ये MySQL और उसका SQL, उसके नाम में कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करो. This is the MySQL was a name given by the Michael to his product, MySQL product. Done. दिस इज समथिंग इट कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग systemctl। और ये आप लोग कहाँ पर जाकर ढूंढ सकते हो? ये मेनली लिनक्स के लिए है। अगर आप लोग विंडोज के ऊपर हो तो आप उसकी चिंता ना करो तो ज्यादा बेटर है। दिस इज MySQL D, this is MySQL D, and this MySQL D is running on the server. This is nothing but a server. This is nothing but a server, and my client is nothing but MySQL. इसका काम क्या है? क्लाइंट का काम क्या है? टू सेंड द SQL क्वेरीज, एंड हियर इसका काम है टू गेट द रिजल्ट बैक। सो इट इज सेंडिंग अ SQL query to the server and giving a result back. This is a simple job that it has got. This is pretty simple, straightforward. सर ये सर्वर और क्लाइंट ये कहाँ पर इंस्टॉल्ड है? मैंने कहा ना, अभी के लिए फॉर द डेवलपर मशीन they are installed on a same computer. And for the developer machine, I'm saying that for the developer machine, डेवलपमेंट मशीन, दिस इज दोनों एक ही मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड है। जब लोग रियल वर्ल्ड में काम करोगे, ऐसे बहुत बार होगा कि डेवलपमेंट मशीन इज समथिंग डिफरेंट। डेवलपमेंट मशीन के ऊपर, डेवलपमेंट मशीन नहीं, सर्वर अलग होगा और क्लाइंट अलग होगा। समथिंग लाइक डायग्राम, कहां पर गया, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम। सो सर्वर आपका कहीं और होगा और आपका क्लाइंट कहीं और होगा। दिस विल बी द मोर कॉमन सिनारियो। अगर आपको ऐसा कोई सिनारियो देखना है, अगर आपको इंटरेस्ट है just to watch some sort of a free products or something like that, एक वेबसाइट है remotemysql.com। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, AWS का IDS वगैरह भी है, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं क्योंकि दे आर पेड ऑप्शंस। remote MySQL is a kind of website available,
एंड दिस इज लाइक अ फ्री वेबसाइट। यहाँ पर आप लोग मिनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। मिनी डेटाबेस आप लॉग इन कर सकते हो, वो कुछ सर्वे के क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं फॉर रेजिंग देयर फंड्स, बट अदरवाइज ये काइंड ऑफ फ्री है अप टू, वेट फॉर मिनट, इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Okay. So what I was trying to tell you is that remote MySQL is nothing but up to 100 MB of data आप लोग यहाँ पर free of cost रख सकते हो. So people who are interested in can make their login created over here and so on. हमें हमारे मॉड्यूल के लिए नहीं चाहिए. जिनको इंटरेस्ट है सर, सर्वर कहाँ पर होता है, क्लाइंट कहाँ पर होता है, सर मेरे को क्लाउड के अंदर डेटाबेस रखना है वगैरह वगैरह वगैरह, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्री ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, a limited option as well, no doubt on that, but it is good as a कहते हैं एज अ फ्रेशर देखने के लिए अच्छा है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो. और ये हम लोग कैसे चालू कर सकते हैं? ये हम लोग चालू कर सकते हैं बाय गिविंग MySQL कमांड लाइन. ओके, दैट इज गुड. बाय द वे, दिस इज द ओनली कमांड लाइन है ऐसी भी बात नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड MySQL वर्कबेंच. दिस इज नथिंग बट अ डेस्कटॉप क्लाइंट. This is nothing but a desktop client that is available, or for that sake we have got like a PHP MyAdmin. This is like a web based client. अभी जो हमने आपको रिमोट MySQL बताया, उसको अगर आपको काम करना है then you have to use PHP MyAdmin. वहां पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, आप लोग ढूंढना. सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आई पर्सनली प्रीफर दिस वन, कमांड लाइन इंटरफेस. आई हेट GUIs. आप लोगों को अमित मैंने कहा कि ये लिनक्स के ऊपर होता है और हम लोग लिनक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, इतना ही मैंने बताया. आई होप यू आर देयर अमित, करेक्ट? सो जिनके पास लिनक्स है, जिनको चाहिए वो लोग गूगल सर्च करना, इसका हेल्प ढूंढना, करना. प्रॉब्लम आता है तो मुझको पर्सनली पूछना. मैं क्लासरूम में आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम नहीं, बाकी सबका टाइम मैं क्लासरूम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. तो सर आप कमांड लाइन के ऊपर क्यों काम कर रहे हो? मैंने कहा आई लव वर्किंग ऑन अ कमांड लाइन. एंड द सेकेंड रीजन, अ पर्सन, लिसन द रूल, person who can work on command line can work on a GUI at any time. Reverse is not true. Person who works on a GUI may or may not be good at working on a command line. तो जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो हम लोग ड्यूरिंग एजुकेशन पढ़ेंगे. GUI वाला तो वहां पर लिख के आता है, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो. आई एम वेरी मच श्योर दैट यू पीपल आर गुड एट क्लिकिंग देयर, और उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप लोग देख सकते हो. इट इज योर चॉइस. जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, हाउ टू वर्क विद द कमांड लाइन, ये हम लोग करने वाले. तो सर शुरू करते हैं. यस, हम लोग शुरू करते हैं. जस्ट टू गेट स्टार्टेड विथ लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे? नथिंग मच. वी विल स्पेंड अनदर 5-10 minutes. आई विल शो यू क्विकली अ बेसिक प्रोसेस, हाउ टू मेक अ रूट लॉगिन एंड हाउ टू क्रिएट अ न्यू यूजर. बिकॉज फ्रॉम टुमारो जो भी हम लोग करेंगे, एक कल से थियरी कम होगा, प्रैक्टिकल ज्यादा होगा. कल से मतलब एक लेक्चर आप लोग और छोड़ दो, उसके आगे जैसे जैसे ये मॉड्यूल आगे बढ़ेगा, यू रियलाइज दैट थियरी इज लेस, हार्डली 10% थियरी, 90% प्रैक्टिकल. इनिशियली पहले 1-2 लेक्चर होते हैं कि मेरे को बहुत सारे कंसेप्ट बताने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को डेटाबेस क्या होता है यही पता नहीं होता है. सो वी नीड टू स्पेंड टाइम ऑन टू दैट. बट हेयर ऑनवर्ड्स एक बार आपके बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, यू रियलाइज दैट कि यहाँ पर थियरी बहुत कम होने वाला है. इट इज ऑल अबाउट कोडिंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट आप लोग मेरे साथ में कोडिंग कर रहे हो, राइट? से कैसे मैं बता रहा हूं. सो आप लोग रूट यूजर मतलब क्या? एडमिन यूजर. it is a very bad practice to use admin user for all your programming purposes. So what we should do, we should create users for performing non-admin tasks or like development task. तो सर वो कैसे क्रिएट करते हैं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं. लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? MySQL ओपन करना पड़ेगा. एंड हाउ डू यू ओपन MySQL? लेट मी टेल यू. क्योंकि आपके केस में MySQL ओपन नहीं होने वाला है, आप लोगों को वहां से प्रॉब्लम आने वाला है. हैव अ लुक एट दिस. मैं ओपन करके दिखाता हूं, ये आपके मशीन पे शायद नहीं चलेगा. ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट. और कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करना है ऐसे सवाल मत पूछना. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, एंड यू सिंपली से MySQL -u
रूट -p, आपको याद होगा रूट का हम लोगों ने कुछ तो पासवर्ड दिया था। वाह, मेरे मशीन पे भी नहीं चल रहा है, वेरी गुड। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट किया आपको डेमो दिखाने के लिए। सो आई एम सेइंग दैट यस, रूट का हम लोगों ने पासवर्ड दिया था मैनेजर। हम लोग MySQL शेल नहीं यूज कर रहे, हम लोग प्रॉपर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहे हैं। एक कमांड प्रॉम्प्ट, यार कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं? जाओ सर्च करो कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज के ऊपर आप लोग हो, कमांड प्रॉम्प्ट। जो लोग लिनक्स के ऊपर है जाके टर्मिनल सर्च करो, ओपन टर्मिनल। ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट, ये मैंने ओपन किया है। एंड ऑन दिस कमांड प्रॉम्प्ट आई एम सेइंग दैट यू कैन गिव अ कमांड सेइंग दैट MySQL। सर क्यों नहीं चल रहा है? आई गेस आपको भी यही एरर आ रहा होगा। यू कैन ट्राई इट आउट, यू कैन ट्राई दैट एरर। यस, डोंट वरी, मेरे को पता है एरर आने वाला है। और आपको ये एरर दिखे, आपको ये एरर दिखे, इसीलिए मैंने इसका सेटअप निकाला था। कोई बात नहीं, अब मैं करके दिखा रहा हूं कि ऐसा एरर आता है तो हमें क्या करना है। लेट मी गो टू द टेक्स्ट फाइल। एज आई से दैट सर हम लोग कौन से नोट्स देने वाले हैं? मैंने बताया ना, ये सारे नोट्स मैं आपको ही देने वाला हूं। सो गेटिंग स्टार्टेड स्टार्टेड विथ getting started with MySQL. I am assuming, yes, exactly. I am assuming कि MySQL is already installed. So how to install MySQL, ये हमारा लास्ट लेक्चर हो चुका है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये MySQL अभी ओपन नहीं हो रहा है, MySQL क्लाइंट ओपन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लीज गो टू दिस पीसी, go to this PC, into this PC, go to the प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली राइट क्लिक करना पड़ता है, राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज दिखता है। सो डोंट आस्क प्रॉपर्टीज कहां पर है। प्रॉपर्टीज, अंडर प्रॉपर्टीज देयर इज समथिंग कॉल्ड एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। हो सके तो नहीं, मेक इट पॉसिबल, डू इट विद मी। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, जैसे से मैं बता रहा हूं, प्लीज क्लिक ऑन दैट। और मैं आपके लिए लिख भी रहा हूं, सो दैट सर आपने क्या बताया मेरे सर के ऊपर से गया। सो आपकी मेमोरी के बारे में मुझको पूरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, टेंशन मत लेना। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, क्लिक ऑन एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन गो ऑन टू द एडवांस टैब। गो टू द एडवांस टैब, वहां पर एक बटन मिलेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ओके, टेक अप दैट बटन। फ्रॉम, वंस यू आर डन दैट, उसके अंदर से सिलेक्ट व्हाट इज टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट द पाथ वेरिएबल। वंस यू सिलेक्ट द पाथ वेरिएबल, प्लीज क्लिक ऑन एडिट बटन। Once you click on edit button, click on new button, click on new button, and into the new button, write your whole path। डबल कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, write your whole path of this MySQL bin। मेरे मशीन के ऊपर ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं ये वाला पाथ लिख रहा हूँ, मैं ये पाथ लिख रहा हूँ। आप लोग प्लीज गिव द राइट पाथ, अंडरस्टैंड दैट। सो कौन सा पाथ वेरिएबल लेना है? कोई भी ले लो, यूजर का ले लो या सिस्टम का ले लो। फिलहाल तो हम लोग यूजर का ले लेते हैं, एंड वी कैन टेक इट एंड वी कैन कंटिन्यू फर्दर। मैंने कहा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है। कमांड प्रॉम्प्ट अगर ओपन किया है तो उसको क्लोज कर दो, उसको क्लोज कर दो, और फिर ये सारे स्टेप्स करना। कैसे? लेट मी गो टू दिस, ये एक्सप्लोरर मैंने ओपन कर दिया। दिस पीसी, राइट क्लिक किया, दिस पीसी राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज के अंदर समवेयर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मैंने एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर गया, वेरी गुड। आई फाइंड समवेयर देयर इज अ एडवांस टैब, सो सी टू इट दैट you go to the advanced tab, and into the advanced tab you click on a button environment variables। you click on a button environment variables। I hope मैंने काफी क्लियरली बताया हुआ है, लिख के भी दिया हुआ है। so then you go and select user variable। okay, I selected the path variable, I selected a path variable, I click on edit button, and once I click on edit button, that is somewhere I need to write, you can just go ahead and you can write the name of this bin। आपके जो बिन का नाम था मैं कॉपी कर रहा हूं, एंड सी टू इट दैट कहां पर गया, न्यू, आई कैन पेस्ट द नेम, आई कैन पेस्ट द नेम ऑब्वियसली। उसके बाद में आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, ओके, ओके। आई हैव जस्ट टेकन केयर, क्लिक ओके। अभी ये भी लिखूं क्या? ओके 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 क्लिक करना है, हाँ लिखो, वो भी लिखना, ओके ओके ओके, राइट। सौरभ, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, प्लीज ओपन अ कोड शेयरिंग पाथ एंड फॉलो द स्टेप्स। इसमें रिपीट करने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट गो अहेड, कॉपी द पाथ, कंट्रोल सी यहां पर करो, वहां पर जाके पेस्ट करो, नथिंग एल्स।
आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन से भी इसमें सेट करो, सिस्टम में सेट किया तो भी चलेगा, यूजर में सेट किया तो भी चलेगा, आई डोंट बॉदर. इंश्योर दैट यू जस्ट ऐड वन एक्स्ट्रा एंट्री. जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, फॉर गॉड सेक उनको डिलीट मत करना, प्लीज उसको डिलीट मत करना. अब इसके बाद में गो अहेड, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट वंस अगेन. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? I say that open, what is that, with MySQL, open command prompt, and into the command prompt you continue the step. Open command prompt for MySQL root login. MySQL root login. Hey, go ahead, follow the step. क्या कमांड लिखनी है? कमांड लिखनी है MySQL -u root -p. Done. This is something that you need to write it. That's it. So go ahead. CMD को फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है. Take up this and follow this. And it is asking you password. ये पासवर्ड आपको पता है. पासवर्ड आपका क्या है? मैनेजर. अगर आपने खुद की अकल नहीं लगाई होगी तो हमने आपको बताया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कीप द पासवर्ड मैनेजर. अगर आपने कुछ और पासवर्ड दे दिया है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल. अपना पासवर्ड दे दो जो कुछ भी आपने रूट के लिए लगाया था एंड यू गेट देयर. As you get there, now there onwards, it is a SQL queries. You find that there are so many different databases are already created. There are so many databases are already created. सचिन, एक बार आपने पाथ वेरिएबल सेट कर दिया, उसके बाद में आपने नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहिए. एग्जिस्टिंग कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर काम नहीं करना चाहिए. और अगर फिर भी आपको एरर आ रहा है, इट ओनली मीन्स दैट आपने ठीक से पाथ सेट नहीं किया है. दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी. डन. ये आप ऑब्वियसली आपके पास इतने सारे डेटाबेसेस नहीं रहेंगे, आपके पास 3 या 4 डेटाबेसेस रहेंगे, नॉट एनीथिंग मोर देन दैट. आपके पास 3 या 4 डेटाबेसेस रहेंगे, नॉट एनीथिंग मोर देन दैट. आपको देख के टाइप करने की जरूरत नहीं है. कोड शेयरिंग यूटिलिटी में जाओ और यहां से कॉपी पेस्ट करो ताकि आप लोग कम से कम मिस्टेक करो. करेक्ट. सो आई रियली डू नॉट वांट पीपल आस्किंग मी द एरर, सर स्पेस कहां पर देना है, स्पेस कहां पर नहीं देना है. इजंट इट? रोहित, नॉट रियली. मैं माइसिक्वल शेल के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं. माइसिक्वल शेल इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट. हाँ, आपका कमांड प्रॉम्प्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू माइसिक्वल CLI. यू कैन टॉक अबाउट. It is not getting converted, but it is running a MySQL CLI inside your command prompt. You are running a MySQL CLI inside your this. This is something that you are doing. Right? Okay. No problem. ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. And now I'm giving a command. I'm giving a command to create a new user. So create user, let's say EDAC at the rate localhost identified by EDAC. Sir, what is this? ये यूजर क्रिएट करने का तरीका है. मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं. आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल. दिस इज नथिंग बट माई यूजर नेम. दिस इज नथिंग बट माई यूजर नेम. आपका यूजर नेम कौन सा है ये मैंने आपको बताया. और वो यूजर लोकल होस्ट मतलब मेरे करंट मशीन के ऊपर काम करने वाला है, ये मैंने उसको बताया. दिस लाइक ए यूजर नेम. सर ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ पासवर्ड. It has to be given in a single quote. Please understand that. This is nothing but my password. Take care of it. और हो सके तो सेम ही देना. अननेसेसरी आपके लिए भी टेंशन नहीं और मेरे लिए भी टेंशन नहीं. ओके, लेट अस गो अहेड. लेट मी क्रिएट अ डेटाबेस फॉर मी. इसको कुछ लोग डेटाबेस कहते हैं, कुछ लोग स्कीमा कहते हैं. आपको जो कहना है वो कहो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम सिंपली सेइंग दैट क्रिएट अ डेटाबेस. Hey, what database is to be created? My database is DAC DB. It is like a name of my database. DAC DB is the name of my database. आप लोगों को जो नाम देना है वो आप लोग दे दो. चॉइस इज योर्स. मैंने ये नाम दे दिया है. और रुको, बट इस डेटाबेस को पूरे परमिशन मुझको इस यूजर को देने. सो grant all permission, all privileges. You call it as grant all privileges
on database name to username, a database name to the username. Please understand that. So this is kind of giving a power of attorney कि इस डेटाबेस की पावर ऑफ अटर्नी मैंने इस यूजर को दे दिया. अब ये यूजर इस डेटाबेस के ऊपर चाहे जो कर सकता है. ये यूजर इस डेटाबेस के ऊपर चाहे जो कर सकता है. लेकिन पावर ऑफ अटर्नी आपको एक्टिवेट करनी पड़ती है. हाउ डू यू डू दैट? यू सिंपली से फ्लश प्रिविलेजेस. So I'm activating it. Flush privileges, I'm activating it. Yes, you put the semicolon at the end. Semicolon indicate that your query is finished. And once you're done that, why don't you say exit? Hey, these are certain commands that you need to run it, and let me run all these commands one after another. I'm just going back and executing all those commands. आपने कहा मैंने सारे के सारे कमांड एग्जीक्यूट कर लिए. Now I'm saying exit. I'm just coming out. I back to my command prompt. I'm back onto my command prompt. Please make a note of this. अब रुको, फिर से एक बार हम लोग फिर से एक बार करेंगे. क्या करेंगे? वी विल गो अहेड. बाय द वे, ये जो पाथ वेरिएबल सेट किया था, ये हर रोज नहीं करना है. ये आज के दिन पे एक बार किया, कल से इसको करने की फिर से जरूरत नहीं है. डोंट डू इट लाइक एवरी डे. यस, एब्सोल्युटली. क्या हुआ? यू हैव टू टाइप इट लाइक दिस. जो मैंने टाइप किया आपको वैसे टाइप करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. जस्ट गो अहेड. यू कैन गिव एनी अदर यूजर नेम एज वेल. मैं फिलहाल तो एक यूजर बना के दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग इस यूजर के लॉगिन से पूरा प्रोग्रामिंग करेंगे. जब अपना परमिशंस का टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये यूजर क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, ग्रांट परमिशन करने का मतलब क्या होता है, और कौन कौन से परमिशंस होते हैं वगैरह वगैरह. अब यहाँ पर मुझको ईडैक का लॉगिन करना है. तो ईडैक का लॉगिन कैसे करना है? यू गो अहेड, गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, गिव द कमांड MySQL u edac and -p. अब रुको, आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है. ये कौन सा पासवर्ड देना है? आपको यहाँ पर वो पासवर्ड देना है जो पासवर्ड आप लोगों ने ऊपर दिया था while creating a user. आई एम टॉकिंग अबाउट द पासवर्ड जो आप लोगों ने यूजर क्रिएट करते वक्त दिया था. पासवर्ड जो आप लोगों ने यूजर क्रिएट करते वक्त दिखा था. जयेश, करके देखो. गो अहेड. नो वन इज स्टॉपिंग यू, राइट? So once you have done that, let me just try it out. edac user create हो गया क्या? edac, yes, user create हो गया. I just go ahead. Why don't I try it once again? अब इसको कितने डेटाबेसेस दिखते हैं? मैंने आज आपको कुछ तो सिक्योरिटी के बारे में बोला था, and I said that यहाँ पर सिक्योरिटी है, सबको सारे डेटाबेसेस नहीं दिखते. Have you observed that? रूट के लॉगिन में मेरे को बहुत सारे डेटाबेसेस दिख रहे थे. यू प्लीज टेक अ लुक एट दिस. इस यूजर को सिर्फ इतने ही डेटाबेस दिख रहे हैं जिसके लिए उसको परमिशंस दिए गए. वाओ, दैट इज फैंटास्टिक. कल से हम लोग जो कुछ भी प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग इस यूजर के लॉगिन से इस डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे. आई रिपीट वंस अगेन, कल से हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग इस यूजर के लॉगिन से इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे. आई रिपीट वंस अगेन, मुझको ये पता है आपको ये 100% समझ में नहीं आया होगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. वी हैव गॉट अ सेपरेट लेक्चर जहां पर हम लोग बात करेंगे, बट उसके लिए टाइम है. फिलहाल के लिए यू जस्ट अंडरस्टैंड बिट ऑफ सिंटैक्स एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट ब्लाइंडली. कि ग्रांट ऑल से परमिशन जाते हैं, क्या जाते हैं? डोंट वरी. ग्रांट पे एरर है. अगर एरर है इसका मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है. या तो आपने यूजर क्रिएट नहीं किया है, या तो आपने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, या फिर कहीं पर तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है. प्लीज चेक द स्पेलिंग योर. आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं. आई कैन सिंपली से एग्जिट एंड आई कैन कम आउट ऑफ फ्रॉम दिस. जस्ट से एग्जिट एंड कम आउट ऑफ फ्रॉम दिस. मैंने कहा ना, आज हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे. हम लोग सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल जाके हम लोग कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं. इफ यू पीपल वांट टू ट्राई इट, स्लाइड में शेयर कर रहा हूं, आप लोग ये ट्राई करके देख सकते हो. क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये कुछ चीजें आप लोग करके देख सकते हो. दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. चलो, हैव यू पीपल डन दैट? लेट मी नो. आई एम वेटिंग फॉर यू. इफ यू आर डन दैट, let me know.
the currently this particular class has got nearby 205 students, 203 students, and I'm expecting that all of you are doing with me. With me, अभी मैं आपके लिए रुक रहा हूँ, not necessary with me. I'm waiting for some time. I will definitely wait for 2 minutes for you people. कोड शेयरिंग टूल चालू करो, वहां पर आपको ये सारे कमांड दिखाई देंगे, सीक्वेंस दिखाई देगा. फॉलो द सीक्वेंस, फॉलो द सीक्वेंस. और वैसे भी मैंने कुछ कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया नहीं है, सिर्फ मैंने आपको क्या कहा है. हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू यूजर. इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. So far 93 students have responded, 94 students have responded. Others, please go ahead. Sir, you write command in VS Code and terminal, it runs directly. Is there any shortcut? नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. पल्लवी, मैं वहां से कंट्रोल सी कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके कंट्रोल भी कर रहा हूँ. कंट्रोल भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट्स कीज. सो मैं VS कोड में आपके लिए टाइप कर रहा हूँ. VS कोड में मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर टाइप किया वो आपको मिले. इसलिए मैं पहले VS कोड में टाइप कर रहा हूँ, और जो VS कोड में टाइप किया है मैं वहां पर जाके वापस से पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे को वहां पर रन करे. सो कोई शॉर्टकट नहीं है. कंट्रोल सी कंट्रोल वी काइंड ऑफ स्टफ इज वर्किंग. कॉपी एंड पेस्ट. All right, all right, all right. 112 people have done it. So 50% crowd has done. What about others? Please do it. It is expected. I'm not really expecting that tomorrow you people come blank and say that sir मेरा user ही created नहीं हुआ है, sir अब मैं login किससे करूँ. Now that kind of stuff is not expected in tomorrow's class. So tomorrow's class I'm assuming that you have logged in with the EDAC user and you are able to see DACDB for you. That's it. हम लोग वहां से आगे कैसे यूज करना है, कैसे करना है, मैं आपको कल बताऊंगा क्या क्या करना है. वापस से कल भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा थियरी स्टिल इन्वॉल्व होगा कि टेबल क्या है वगैरह वगैरह वगैरह. थोड़ा सा टाइम लगेगा कल के लेक्चर में, बट डे आफ्टर टुमारो यू कैन एक्सपेक्ट दैट वी आर इनटू द फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग मोड. तो वहां पर थियरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा. 137 स्टूडेंट्स हैव डन इट. ओके, डन 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 डन. कुलदीप, एरर क्या आ रहा है, एरर तो बताओ यार. अगर आप लोग पाथ सेट करने के बाद में अगर आपको एरर आ रहा है, इट ओनली मींस दैट आपने वो करंट कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज नहीं किया है और नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं किया है. टेक केयर ऑफ इट. MySQL इज नॉट रिकॉग्नाइज. मैं फिर से कह रहा हूं, सेट द करेक्ट पाथ, कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करो, ओपन अ न्यू कमांड प्रॉम्प्ट. पहले वहां के सारे ओके ओके क्लोज कर दो, उसके सारे विंडोज क्लोज कर दो, उसके बाद में. हाँ, सिंटैक्स का किसी को तो एरर है. क्रिएट यूजर EDAC लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय EDAC एट लाइन 1. क्रिएट का स्पेलिंग गलत है. हु इज दैट? प्रसाद. क्रिएट का स्पेलिंग रॉन्ग है. रिपीट आफ्टर लाइन नंबर 22 ऑन कमांड लाइन प्लीज. कमांड लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना ही किया है. यू जस्ट वेंट ऑन अ कमांड लाइन. कहां पर गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट? यू जस्ट गो टू द कमांड लाइन. आई जस्ट गिवन अ कमांड, मैंने पेस्ट किया, इसको रन किया. EDAC इसका पासवर्ड था, वो मैंने डाल दिया. एंड ऐसे शो डेटाबेसेस आपको दिख रहा है. ये कैसे इनसेंसिटिव है, अपने कैपिटल स्मॉल कुछ भी किया तो भी वही होने वाला है. दैट इज नॉट अ बिग डील. एग्जिट किया, खत्म हो गया. अशरफ, दिस इज प्रीटी क्लियर. नथिंग मच आई हैव डन देयर. What we can एक्सेस डिनाइड. अरे यार, आगे यूजर नेम पासवर्ड तो डालो. वैभव, MySQL -u वगैरह वगैरह कुछ तो डालो आगे जाके. गो अहेड, गिव द होल कमांड, डोंट से ओनली MySQL एंड एंटर. एक्सेस डिनाइड फॉर द रूट @लोकल होस्ट. आपने -p दे दिया है क्या शुभम? चेक करो, -p दिया है क्या, पासवर्ड सही डाला है क्या. अगर आपने पासवर्ड गलत डाला है तो नथिंग, नो वन कैन हेल्प यू नाउ, राइट. सी टू इट दैट -p आपने यूज किया है और नीचे एंटर पासवर्ड आपने सही डाला है. वैभव, मैंने आपको आपके एरर का सोल्यूशन बताया.
राइट MySQL पूरा लाइन खत्म करो. Vaibhav, I guess I have already given you solution. Vikas is asking, is there any way to find out which user is logged in? विकास, अगर आपको स्लाइड पीछे दिख रहा है तो स्लाइड के ऊपर एक कमांड अवेलेबल है. कौन सा यूजर ने लॉगिन किया है ये देखने के लिए अगर आपको कमांड चाहिए, वैसे भी मैं कल बताने वाला हूं, डोंट वरी, दिस कमांड यू कैन यूज. इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा यूजर है, कौन सा डेटाबेस है. राइट. One question now. On my system, EDAC user and previous one server. MySQL user is created. Yes, good. Good, done. Showing, not showing database. इसका मतलब आपका ग्रांट का परमिशन गलत हुआ है. बिलाल, चेक, ग्रांट परमिशन आपने नहीं दिया है. वापस एक बार रूट का लॉगिन करो और वापस एक बार ग्रांट का परमिशन दे दो. जब तक ग्रांट का परमिशन नहीं होगा तब तक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. सम्यक, I have opened a command prompt window only. Vaibhav, why are you sending the same error again and again, yaar? Or is it different error? You are sending the same error again and again. आपने कितनी भी बार बताया तो भी सॉल्यूशन वही रहने वाला है. गिव द होल कमांड लाइन यार. कहां पर गया वैभव? प्लीज टाइप फुल थिंग, नॉट हाफ थिंग. सिर्फ MySQL टाइप करोगे तो यही एरर आता है. कल हम लोग क्या पढ़ने वाले टॉपिक में? नथिंग मच. कल हम लोग बेसिकली वी विल कंटिन्यू फर्दर. सी, टुमारोज टॉपिक्स आर समथिंग लाइक दिस, दैट डेटाबेस क्रिएट होता है मतलब क्या होता है. हम लोग एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे. टेबल क्रिएट होता है मतलब बैकग्राउंड में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे. फिजिकली क्या होता है, लॉजिकली क्या होता है. डेटा टाइप्स का क्विक ओवरव्यू लेंगे. मैंने कहा क्विक ओवरव्यू लेंगे. ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसके कुछ डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल डू द प्रैक्टिकली. कुछ चीजें, हाउ टू लोड द रिकॉर्ड, हाउ टू यूज द सोर्स फाइल्स, ऐसे कुछ छोटी मोटी चीजें, इंसर्ट रिकॉर्ड वगैरह करेंगे. नॉट हेवी वन, तो बेसिक वन विल स्टिल कंटिन्यू. कैन यू प्लीज शो वेयर बिन फोल्डर इज? अरे यार, मैंने वो भी पाथ लिख के दिया है. ऐसा क्या कर रहे हो यार? आपका बिन फोल्डर कहां पर है? आइडियली इट शुड बी ओवर हेयर. सौरभ, आई हैव रिटन एवरीथिंग फॉर यू. अगर आपने इंस्टॉलेशन नॉर्मल लोकेशन के ऊपर किया है देन इट इज देयर. एडमिन मोड में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है. नॉर्मल यूजर से चलना चाहिए. एक्सेस डिनाइड. ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस. ये कौन है? मनस्वी. प्रिविलेजेस का स्पेलिंग रॉन्ग है. कॉपी पेस्ट करो यार. मैंने कहा ना इंग्लिश इंपॉर्टेंट है. मेरा भी कभी कभी गलत हो जाता है. थोड़ी देर पहले मैं किसी को तो पढ़ा रहा था, सो आई डन अ स्पेलिंग मिस्टेक. डोंट डू द स्पेलिंग मिस्टेक गाइज. MySQL इज नॉट रिकॉग्नाइज. एरर सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है. आपने पाथ या तो ठीक से सेट नहीं किया है या तो पाथ सेट करने के बाद में आपने कमांड प्रॉम्प्ट फिर से ओपन नहीं किया है. हु इज दिस? नितिन, वो हाइफन हाइफन सिक्वल के साथ कॉपी मत करो. जस्ट कॉपी द बेसिक कमांड. ये पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है विद हाइफन हाइफन सिक्वल. यू आर सपोज टू कॉपी ओनली वन लाइन ऑफ कमांड, शो डेटाबेसेस. या, गुड एरर्स. शो इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल एक्सटर्नल कमांड. ये कौन है ये? नितिन. नितिन, this command is to be given inside MySQL. This command is to be given inside MySQL. शो कमांड का अगर कोई एरर दे रहा है, इंश्योर दैट आपको ये MySQL के अंदर कमांड देना है. MySQL के बाहर अगर आप लोग कमांड दोगे तो एरर यही आने वाला है. पहले लॉग इन करो, बाद में कमांड दो. नितिन, D12 ग्रुप. DAC CD is not showing. DAC database is not showing.
इसका मतलब आपने परमिशन ठीक से नहीं दिया है। और कुछ है, मनस्वी प्रिविलेज स्पेलिंग इज रॉन्ग, यस आई डन दैट। द कमांड वी आर गिविंग हेयर, सो ऑल्सो सिक्वल कमांड, जो मैंने यहाँ पर सिक्वल के ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो सारे सिक्वल के कमांड है, वो माई सिक्वल के अंदर देने। यस, लॉगिन इज डन। कौन है ये जिसको मारिया डीबी दिखा रहा है? सम्यक, अगर आपको मारिया डीबी दिखा रहा है, देर आर लाइकली चांसेस आर दैट यू आर यूजिंग जैम्प सर्वर और समथिंग लाइक दैट। आर यू यूजिंग जैम्प? इफ यू आर यूजिंग जैम्प, जैम्प में माई सिक्वल नहीं आता है, जैम्प में मारिया डीबी आता है। माइनस यू इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। माइनस यू क्यों दे रहे हो? पूरा कमांड दो ना भाई। माई सिक्वल हाइफन यू ईडैक हाइफन पी, गिव द होल कमांड, डोंट गिव हाफ कमांड। What are you saying every time that word like sit width? Sit width? अथर्व, if the password is not asking, if password is not asking, इसका मतलब आपने माइनस पी नहीं दिया है। माइनस पी विल आस्क फॉर अ पासवर्ड। अगर माइनस पी नहीं दिया है, पासवर्ड इज नॉट आस्क्ड। जिन लोगों का ये इंस्टॉल करके हो चुका है, दे कैन इवन लीव इट, नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो बाय बाय, यू कैन टेक केयर। इफ यू पीपल डन इंस्टॉलेशन, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो यू कैन गो बैक। कुछ लोगों एरर है, मैं उनको आंसर दे रहा हूँ एंड देन इवन वी विल स्टॉप। फिर भी अगर एरर रहते हैं, नथिंग टू वरी। कल का आपका जो लैब होगा, दिग्विजय सर आपके साथ होंगे, आपके मैम आपके साथ होंगे, सो डेफिनेटली यू कैन गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व फ्रॉम देम एज वेल, नॉट अ बिग डील। शुभम क्या कह रहा है? माई सिक्वल सर्वर बिन इज करेक्ट। 0.08 सेकेंड क्या है? 0.08 सेकेंड, हाउ मच टाइम इट टुक टू एग्जीक्यूट द कमांड? भूषण, yes, you have given a path, that is correct. Multiple user can logged in और सिंगल वन। आज के लिए तो सिंगल यूजर ही करेंगे, बाद में जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डील विद द मल्टीपल यूजर्स एज वेल। इसके लिए अभी और टाइम है, बहुत टाइम है। बीन से बीन के क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उसका पाथ उठाना है, कॉपी करना है। ये पाथ उठाना है और ये पाथ आपको कॉपी करना है। ऐसे दैट ऐड दिस पाथ, जो आपने न्यू किया है उसके अंदर आप लोगों को ये पाथ ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एज्यूमिंग दैट कि आपका माई सिक्वल भी उसी लोकेशन के ऊपर है। यस, यू शुड लीव, नो प्रॉब्लम। यस यस, श्योर श्योर, लेक्चर इज ओवर, डोंट वरी, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग न्यू। चलो डन, almost all problems I have answered. Which database technologies are used by the big companies like Amazon, where data is so huge? Yes, they are also using this one: MySQL, Oracle, MS SQL, plus something more, NoSQL databases, plus big data technologies. बहुत सारी चीजें यूज की जाती है on a big companies. That's it. We will stop over here. जिन जिन लोगों के प्रॉब्लम अभी भी बचे हुए होंगे, see to it that you take the help from lab faculties during lab time and make yourself comfortable. Thank you very much. Bye bye. Take care.